डिस्कस करिबा मॉक टेस्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग अबाउट सीपीएम पोर्ट आछि ऑप्टिमिस्टिक टाइम मोस्ट लाइकली टाइम आउ पेसिमिस्टिक टाइम हमको ऑलरेडी क्वेश्चन ने देइछि फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करिबा एक्सपेक्टेड टाइम बाहर करिया पई टीई रो फार्मूला टी नॉट प्लस 4tm प्लस टीपी बाय 6 हैला तो फास्ट फाइंड आउट करो 7 8 आउ 9 सीरियली पके दबो 7 प्लस 4 into 8 प्लस 9 by 6 এটা বাহার যাও তোমার 8 डेज एक्टिविटी बी ପାଇଁ চলা চেক कर दो 7.5 ଦେଇଛି 6 ଦେଇଛି ଆଉ 12 ଦେଇଛି सेम 8 डेज आसीबो तो एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ बी बी फॉर्मूला मन रखिबो टी नॉट प्लस 4tm प्लस टीपी बाय 6 इन ए क्रिटिकल पाथ मतलब जोड़ा सबुठु अधिका ड्यूरेशन थिबो ताको हमें कहबा क्रिटिकल पाथ से पाथ रे हम पखरे कोनोसी डिले करिया पई कोन से प्रकार हम पखरे अपॉर्चुनिटी नै इन द क्रिटिकल पाथ ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग फ्री फ्लोट कैन बी फ्लोट हमर केते प्रकार फ्लोट माने कोन फ्रीडम हैला फ्लोट कहा से तो रिलेटेड उठो होजे फ्लोट आउट होजे स्लैक फ्लोट कहा से तो रिलेटेड एक्टिविटी से रिलेटेड हैला फ्लोट इज एसोसिएटेड विथ एक्टिविटी तो फ्लोट माने कोन केते हम पाखरे फ्रीडम अछि फ्लोट होछि केते चारि प्रकार फ्लोट अछि हम पाखरे फर्स्ट होछि टोटल फ्लोट फ्री फ्लोट इंडिपेंडेंट फ्लोट आउट होछि इंटरफेरिंग फ्लोट इंडिपेंडेंट अनदर वन इज योर इंटरफेरिंग फ्लोट जदि हमें गोटे एक्टिविटी देखिबा माने दीटा इवेंट सपोज एटा होछि आई इवेंट अनदर वन इज योर जे इवेंट टाइम ऑफ द आई जे इवेंट रो एक्टिविटी पाई लागियो सपोज टी टाइम लागिला तले आई इवेंट रो हमर गोटे आसीबो एक्सपेक्टेड टाइम टी ऑफ आई टी एल ऑफ आई एस जीवो सेमिति जे इवेंट रो आसीबो टी ऑफ जे टी एल ऑफ जे गोटे होची अर्लीस्ट आउट होची लाटेस्ट तो फ्रीडम माने कोन एलएसटी माइनस ईएसटी बा एलएफटी माइनस ईएफटी ताको हमें कहबा गोटे होची स्टार्टिंग डिले अनदर वन इज योर कंप्लीशन डिले तो क्वेश्चन को होची कंस्ट्रक्शन प्लानिंग फ्री फ्लोट कैन बी कोन हे परिबो फ्री फ्लोट इक्वल टू टोटल फ्लोट ना ग्रेटर देन इंडिपेंडेंट फ्लोट ना लेस देन इंडिपेंडेंट फ्लोट ना ग्रेटर देन टोटल फ्लोट कोन हे परिबो greater than independent float. ग्रेटर देन इंडिपेंडेंट फ्लोट जेमिति फ्लोट सेमिति इवेंट केस आसो स्लैग नेगेटिव फ्लोट कैन ऑकर इन केस ऑफ को केस रे नेगेटिव फ्लोट आस परिबो नॉर्मल एक्टिविटी क्रिटिकल एक्टिविटी सब क्रिटिकल एक्टिविटी आउट ऑफ सुपर क्रिटिकल एक्टिविटी सुपर क्रिटिकल activity. सुपर क्रिटिकल एक्टिविटी से केस तमरो नेगेटिव फ्लोट आस परिबो फ्लोट माने होचे फ्रीडम व्हाट इज द एक्चुअल थिकनेस ऑफ वॉल with 1 centimeter mortar joint of half brick वाला thickness केते पचाच size of the brick यदि कहबा 19 into 9 into 9 9 into 9. mortar हले 20 into 9 10 into 10 with mortar हला तो half brick thick wall normally केते रु केते भीतर होई थाए 7 to 9 cm 7 to 9 centimeter 7 to 9 centimeter हेलो तो 1 सेंटीमीटर थिक दे देछि त माने 9 to 10 सेंटीमीटर पाखा पाखी आंसर आस्तु तो आंसर कोन होबो 9 centimeter. 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर देखो थिकनेस ऑफ द वॉल दे देछि ना खाली ब्रिक आगे। होचे 9 सेंटीमीटर खाली ब्रिक होचे 9 सेंटीमीटर वॉल हेले पुनी मोटर आसीबो कि नै 1 सेंटीमीटर मोटर अछि 1 सेंटीमीटर मोटर ताल टोटल थिकनेस केते हला 10 cm 10 सेंटीमीटर हला ताले 9 इज नॉट आंसर Anti. नॉन ऑफ द Anti, none of the above. नॉन ऑफ द अबव 9 सेंटीमीटर होची ब्रिक रो 1 सेंटीमीटर होची मोटर से वॉल रो बचा देछि नेक्स्ट क्वेश्चन इफ ए मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन हेले पर्टिकुलर डायरेक्शन हेले ताको हम कोन कहबा
सॉइल रिसेंटली पढ़ाई आइसो हमर सीपेज चैप्टर रे ऑल डायरेक्शन हेले ताको हमें कोन कहबा आइसोट्रोपिक आइसोट्रोपिक गोटे डायरेक्शन हेले ताको हमें कहबा होमोजेनियस 6 number what are the equilibrium conditions to be satisfied with a system non coplanar माने गोटे प्लेन नथिबे किंतु मीटिंग होतुवे गोटे पॉइंट दैट इज योर कॉन्करेंट इक्वेशन ऑफ पचाज कोन हिजो समेशन ऑफ द हम पाखर इक्विलिब्रियम कंडीशन जहा जहा से अप्लाई कर दबो समेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 समेशन ऑफ द वर्टिकल फोर्स 0 नॉन कोप्लानर देछि माने तीनटा अलग अलग प्लेन जो गोटे एक्स प्लेन गोटे वाई प्लेन गोटे जेड प्लेन x0 y0 z0 when calcium carbonate माने limestone CaCO3 calcium carbonate is heated माने calcination it decompose to give dash and dash CaCO3 को जदि हम हीट करबा से प्रोसेस को हम कहते calcination तो calcination करबा द्वारा हम पाखे कोन पाइथांदे क्विक लाइम पाइथांदे दैट इज योर CaO ता सहित कोन पाइबा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाइबा तो CaO पाइबा ता सहित कार्बन डाइऑक्साइड पाइबा पुनी सेही CaO अगेन सेही क्विक लाइम जेतळे अगेन पानी कांटेक्ट रे आसीबो कोन हे जिवो CaOH रो होल 2 CaOH होल 2 बा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एको हमें कहबा स्लैग्ड लाइम CaOH होल 2 बा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड एज स्लैग्ड लाइम बा स्लैग्ड लाइम जोटा कि नॉर्मली यूज करा जाय हाइड्रोलिक स्ट्रेंथ पे हम यूज करते स्लैग्ड लाइम आ व्हाइट वाशिंग पे कोन लाइम यूज करियो व्हाइट वाशिंग फैट लाइम सर फैट लाइम वेरी गुड फैट लाइम लाइम रे नॉर्मली इंप्योरिटीज ता के थाए क्ले थाए गोटे होचे लाइम आ गोटे होचे क्ले होचे इंप्योरिटीज जहार क्ले कंटेंट जते अधिक हबो से सेते हाइड्रोलिसिटी शो करिवो हाइड्रोलिसिटी होचे लाइम रो गोटे प्रॉपर्टी हाइड्रोलिसिटी सेते शो करिवो जहार क्ले कंटेंट जते अधिक हबो फैट लाइम रे नॉर्मली कैल्शियम ऑक्साइड थाए मोर देन 95% आ क्ले बाय इंप्योरिटीज थाए लेस देन 5%. क्वेश्चन नंबर 8 identify the process responsible for the formation of sedimentary rocks sediments गुड़ा डिपोजिट हे जो तयारी हेता ताको हम कहबा sedimentary rocks जेमते limestone sandstone एमाने सब होचोंदे sedimentary rocks कोन हो आंसर सी सर ऑप्शन सी deposited layers of sand and silt subjected to enormous overburden pressure over geological टाइम्स जेतपन हम टाइम स्पेंड होचे सेडिमेंट्स गुला डिपोजिट हेइ के हमर तयार हेतांती तो ऑप्शन सी हेजबो आंसर नॉर्मली हमें फर्स्ट क्लास से डिस्कस करथले फर्स्ट डिस्कशन क्लास से जे स्टोन विषय डिस्कस करथले जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हले इग्नियस सेडिमेंटरी मेटामॉर्फिक इग्नियस रे आसीबो के बासाल्ट हे गला ट्रैप हे गला ग्रेनाइट सेडिमेंटरी आसीबो सैंडस्टोन लाइमस्टोन लैटराइट डोलोमाइट जिप्सम चॉक मैग्नेसाइट सेमते मेटामॉर्फिक रे आसीबो तारो व्हेन एक्सपोज्ड टू high temperature and pressure due to metamorphism process जो सॉइल तयार हेता हम कहबा मेटामॉर्फिक रॉक जेमिते लाइमस्टोन लो होची मार्बल ग्रेनाइट रो होची नीस क्वार्टजाइट स्लेट ये सब होचंती मेटामॉर्फिक रॉक H for IS 1077 the standard modular size building bricks shall be modular sir. size पचास D 19 into 9 into 9 नॉमिनल पचारले 20 into 10 into 10 अच्छा जदि ट्रेडिशनल पचार देला 23.5 into 22.9 हां 22.9 11 आउ 7 नेक्स्ट 10 नंबर the defects which are longitudinal separation keywords होची यार longitudinal separation defects को हमें कौन कहबा डिफेक्ट रो कौन कौन थाए गोटे हमरो हार्ट शेक स्टार शेक रिंग शेक कौन तू कौन डाउट कौन सेट को है डाउट कहउछन कि आंसर कहउछन आंसर
अच्छा आंसर क्वेश्चन तो लॉन्गिट्यूडिनल सेपरेशन हेलो लॉन्गिट्यूडिनल सेपरेशन को हमें कौन करबा कौन करबा सेक बहुत प्रकार सेक Sec. अछि हार्ट सेक स्टार सेक्स माने बाहर बाहर पटु हला जोटा आउटर बार्क अछि सेठी तमरो डिफेक्ट देखा जिवो रिंग सेक रिंग रिंग टाइप देखा जो जो एनुलर रिंग्स अछि से सराउंडिंग रे क्रैक्स देखा जिवो कप सेक जोटा को जमे सेक नेक्स्ट हो 11 the flash point temperature degree centigrade of paving grades of bitumen as per the Indian standard flash point out होची फायर पॉइंट गोटे होची हमर वेपर रे निया लागिवो आउट होची बिटुमेन रे निया लागिवो से कोची फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर टा केते फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर केते 220. 220 भेरी गुड 220 होची फ्लैश पॉइंट मन रखियो कौन कौन हमर ग्रेड उडा अछि बिटुमेन रो VG10 VG20 VG30 VG40 40. पास पॉइंट होची केते 220 डिग्री सेंटीग्रेड होची पास पॉइंट सॉफ्टनिंग पॉइंट जदि ता देखिबो VG10 रो होची 40 20 रो होची 45 सब सीरियली मन रखिबो केबे भी आउ सेकंड टाइम पढिबा दरकार नै 10 20 30 40 40 45 47 50 सीरियली मन रखिबो सब 47 50 ये होची सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट हैला तो विस्कोसिटी अछि माने तारो इनटू 80 कर देले पाई जिवो तारो डेंसिटी VG10 लिखा है माने 10 into 8 माने 800 पॉइज पाई जिवो तार विस्कोसिटी पाई जिवो 800 पॉइज पॉइज होची डायनामिक विस्कोसिटी रो यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ସବୁ ଯା 220 डिग्री 220 सब 220 Flash point. हमें नॉर्मली बिटुमेन फास्ट पॉइंट हमें 220 ही थाए इफ द सॉइल इज ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 कौन पहुंचो तो से ग्रेड रोड डिफरेंशिएट कर देछन VG 10 20 30 40 विस्कोसिटी ग्रेड 10 20 30 40 10 माने तार विस्कोसिटी केते हे जिवो 10 माने ता विस्कोसिटी केते 10 देखो विस्कोसिटी मन रखा ट्रिक होउछ सबले कोन करबो इनटू केते करबो 80 कर देबो तो इनटू 80 है ता विस्कोसिटी तल केते हे जाउची इनटू 80 कले 800 800 हे जाउची तो सेही भली समस्तंकर हाईवे मेटेरियल जेतोले पढिबो ताको तार जति सब टेस्ट गुडा अछि ताको सब भलसे टिके देखि देबो ता भीतर क्वेश्चन तमे निहात पाइबो ओटा होची क्रॉसिंग वैल्यू टेस्ट हे गला एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू हे गला TDS टेस्ट के डाउट पर किछ पछरंती तीन चारटा वॉइस एक्चुअली मिक्स हे होची 10 20 ভিতরে ডিফারেন্স কোন আছে সেটা হচ্ছে গ্রেড পেনিট্রেশন সেটা হচ্ছে গ্রেড ভিজি হচ্ছে কোন ভিজি র ফুল ফর্ম হচ্ছে কোন ভিসকোসিটি গ্রেডিং তো ভিজি 10 হচ্ছে কোন যাହାର ভিসকোসিটি রইব 800 পয়েন্ট ভিসকোসিটি মানে কোন শিয়ার স্ট্রেস ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু du upon dy তো সেটু আমি পাইবা ভিসকোসিটি ভিসকোসিটি মানে কোন যে যেতে বহলিয়া ভিজি 10 মানে 800 পয়েন্ট 800 পয়েন্ট মানে কোন कम viscosity तो कम viscosity माने हम तो को जिंस यूज करबा स्प्रेइंग एप्लीकेशन ताको हम स्प्रे करिवार यूज करबा जोटी स्प्रेइंग वगैरह काम थिबो सेटे हम VG10 यूज करबा जोटी कोल्ड क्लाइमेट थिबो जोटी पेविंग एक्शन दरकार सेटे हम VG20 यूज करबा आउटी अधिक viscosity हैला VG30 हम यूज करबा से भली जोटी ठीक हाई ट्रैफिक थिबो VG40 हम यूज करबा जोटी हेवी ट्रैफिक थिबो जोटी माने मैक्सिमम ट्रक जीवा आसा करछि से भली रोड रे हम VG40 यूज करबा जेमिति हमर टोल प्लाजा हे गला जोटी हम टोल कलेक्शन होजी जोटी मैक्सिमम गाड़ी आसीबो रहिबो सेठी हम VG40 यूज करबा हैला सो डिपेंड एप्लीकेशन ग्रेडिंग अनुसार विस्कोसिटी अनुसार 10 20 30 40 मन रखिबो 30 बाय 40 रो माने कोन 30 बाय 40 रो पेनिट्रेशन माने होजी कोन 3 mm रो नेकी 4 mm रो पेनिट्रेशन करिवो जदि हम ताको पेनिट्रेशन टेस्ट करूछन तार माने होची 30 बाय 40 क्वेश्चन ने बहुत थोड़ा पचारे 80 बाय 100 80 बाय 100 माने होची 8 mm रो नेकी 10 mm पेनिट्रेशन होतबो सबुटो बेस्ट बिटुमेन जदि क्वेश्चन ने पचारे दैट इज योर 30 बाय 40 ग्रेड रो बिटुमेन होची सबुटो बेस्ट हैला जेमिते A4 पचार दिए A फॉर आसाम S फॉर अदर देन आसाम ये सब छोटो मोटो जिंस पेविंग हाईवे मटेरियल्स एबे जो लिखा है माने 40 45 47 50 एटा बा कहले हमें सॉफ्टनिंग पॉइंट
हूँ कौन सफ्टेनिंग पॉइंट 40 डिग्री सेंटीग्रेड 45 डिग्री सेंटीग्रेड ये हूँ तार सफ्टेनिंग पॉइंट माने ए टेम्परेचर से सॉफ्ट हवा स्टार्ट करियो दैट इज द सफ्टेनिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा आ कार कुछ डाउट 12 नंबर इफ द सॉइल इज ऑफ एक्सपेंसिव टाइप जेमिति के ब्लैक कॉटन सॉइल हे गला देन द बेस्ट फाउंडेशन टाइप कौन हो End बेस्ट bearing. फाउंडेशन टाइप एंड बियरिंग Friction pile. फिक्सन पाइले एंड बियरिंग वेरी गुड Under rim सब type. सब ऑप्शन तो Under सरी rim गला type. खाली गोटे ऑप्शन रहला सब ऑप्शन सरी गला खाली बेटर टा कहीं छाड़ देला बेटर टा मार कॉन्सेप्ट होचे कोन जे ब्लैक कॉटन सॉइल होचे कोन एक्सपेंसिव सॉइल कारण यार मोंट मोरिलोनाइट कंटेंट थाए जोथरे के सोडियम मोंट मोरिलोनाइट शोइंग एक्टिविटी 4 रु 7 हाईली स्वेलिंग आउ श्रिंकेज प्रॉपर्टी शो करिवो सेति पई चांसेस अछि कोन हबार ए सॉइल जदि हम फाउंडेशन करूछंती चांसेस अछि ये स्वेलिंग करिवो माने ऊपर को उठी आसीबो तो से केस में सबुठो बेस्ट होची कोन यूज करबा अंडर रिम्ड पाइल सो दैट कि जदि सॉइल स्वेलिंग करिवो ये ताको अटके के रखिवो जदि डायमीटर ऑफ द पाइल डी हुए देन अंडर रिम्ड पाइल रो डायमीटर होबो 2.5 डी 2.5 D. 2.5 डी विलेज फाउंडेशन इज वन ऑफ इट्स टाइप आउथरे कोन कहू अरे जो अलगा जो सब पाइल रहला सेटा को टाइप रो सॉइल रे यूज हुए जदि देखो पाइल आमे केतोळे यूज करबा जदि हमर बहुत सारा डेप्थ रे गोटे हमर हार्ड स्ट्राटा अछि जदि बहुत सारा डेप्थ रे हमर गोटे हार्ड स्ट्राटा अछि देन सेठी हम यूज कर परबा एंड बियरिंग पाइल माने होछि से जान गोटे रॉक स्ट्राटा रे कोन हबो सपोर्ट नै कि सेठी लोड ट्रांसफर हे परिबा जोटी भलो हमर रॉक स्ट्राटा थिबो हार्ड स्ट्राटा थिबो सेठी हम यूज कर परबा एंड बियरिंग पाइल आ जोटी बेसी हार्ड स्ट्राटा नथिबो सेठी तमे कोन यूज करिवो फ्रिक्शन पाइल यूज करिवो सो दैट कि साइड आडू अधिका रेजिस्टेंस मिलिवो जदि पाइल आमे देखिबा पाइल होछि नॉर्मली दी प्रकार थाय गोटे होछि हमर कोन होछि फ्रिक्शन पाइल आउट होछि एंड बियरिंग पाइल अकॉर्डिंग टू लोड ट्रांसफर तो स्किन फ्रिक्शन पाइल ले साइड आडू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जनरेट हेइ थाय सेटा होछि ड्यू टू एडहेशन बिटवीन पाइल एंड सॉइल तो सेटा में केमिति भार कोनते अल्फा इनटू तार एरिया पाई इनटू डी इनटू एल हला अल्फा होछि कोन एडहेशन फैक्टर इनटू जतिता बियरिंग कैपेसिटी थिबो प्लस एंड बियरिंग पाइल में केमिति कैलकुलेशन करबा क्यूबी जोडा कि होछि एंड रेजिस्टेंस इनटू तार एरिया बेस रो एरिया जदि सर्कुलर यूज करछो पाई बाय 4 इनटू डी स्क्वायर डिपेंड करछि सॉइल ऊपर बेटर रिलेस फाउंडेशन बेटर पाइल में कोड यूज करबा जोठी हम इंक्लिनेशन दबा जोठी हमर एनी किछु टिल्ट एंगल ले हम यूज करबा सेटा में दबा बेटर पाइल माटी भीतर सब पाइल मान तो सब किछु माटी भीतर ही ऊपर यदि हला तो कलम हे गला विलेज फाउंडेशन इज वन ऑफ इट्स टाइप विलेज फाउंडेशन जोड़े सालो फाउंडेशन Straight foundation. विलेज फाउंडेशन में कौन Straight foundation. Shallow foundation. सालो फाउंडेशन विलेज फाउंडेशन रे एक्चुअली कौन हेडी स्टील दिया हेता है होला स्टील लो आई सेक्शन बोली स्टील दिया हेता ताको हम कहबा विलेज फाउंडेशन फुटिंग टा एक्चुअली स्टील ले तैयार हेता है बहुत हेवी लोड को ट्रांसफर करे थे नेक्स्ट इज योर 14 the cheapest way to prevent the formation of diagonal bottom corner cracks in window can be prevented by B. option B using concrete blocks for wall instead of bricks Providing seal beams. providing seal beams ଆମର ୱିଣ୍ଡୋରେ ଯଦି ଦେଖିବ ଗୋଟେ ହଉଛି ହେଡ୍ ଆଉଟ ହଉଛି ସିଲ୍ जोटा विंडोर तले दिया ही था जे कि कौन करिवो विंडोर लोड को ट्रांसफर करिवो विंडोर कारण हमर वाल टा एक्चुअली एते लोड निये नाही जदि तमे वाल को लोड ट्रांसफर करिवा क्रैक्स आस जिवो सेति पई तळे हमें दबा सील ऊपर हमें दबा हेड ला बा जोटा कि तमे कोन कहजो फांका सानथले कबाट वगैरह हे गला लिंटेल तो सील बैंड हो ना बीम सील बीम होबो आ कोन सील अछि सील बीम ऑप्शन डी 15 dog legged staircase are half ton Half ton. 180 degree 180 degree half ton 16 which of the following is a region of settlement of building एमानक भितरु किए सेटलमेंट हबार ओडे रीजन weak bearing soils all of the above poor compaction soil consolidation
17. The increased cohesiveness of concrete make it increased cohesiveness of concrete. Cohesion माने same particle और same particle भितर force of the attraction. जदि particle particle भितर segregation option A. more liable. Very good. যদি particle particle ভিতরে force of the attraction ଭଲ ରହିଲା ବା bonding ଭଲ ରହିଲା ତାହେଲେ segregation ହବ ନାହିଁ segregation ର ମାନେ ହଉଛି ଅଲଗା ହେଇଯିବ ଯଦି bonding ଭଲ ରହିଲା ତାହେଲେ ଅଲଗା ହେବେ ନାହିଁ next ଯିବା 18 आंसर कौन होगा सर? आंसर हबो ऑप्शन ए less liable to segregation लेस टा बोलते ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଜାଣି ପାରିନି ସେ तो less टा को से l को t कर less देइछन ହେଇଯାଇଛି। t is liable to segregation तमको लागु तो t जोटे नुवा वर्ड आसिला ଆଉ टेक्निकली ନୂଆ ୱାର୍ड ଆସିଲା ସାର୍ ମୁଁ less liable to segregation दे आर्यन वालों कहबो गुटे मार्क देबे 3 मार्क न देबे गुटे मार्क देबे next 18 in fiber reinforced concrete if the fibers are not dispersed properly then the resulting problem is called as गुटे fiber reinforced concrete अछि से कहछि if fibers are not dispersed properly fiber माने जदि properly dispersed हेई नाहंती then से problem को हमें कोन कहबा ताको हम कहबा कोन वेल्डिंग नुआ नो क्वेश्चन है एटा टिके नुआ टाइप रो क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स खाली रखिबो बेलिंग हेलो plumb of lines कोन Intersect at the center of at the center of the earth. B. plumb of lines intersect at the center of the earth Center of the earth. ହେଲା जदि parallel हे गला जदि हम पाखरे प्लेन सर्वे अछि से केस रे plumb of lines are parallel to each other in case of the geodetic survey plumb of lines are towards the center but in case of the 260 km square जदि अधिक हला देन geodetic survey कम हले plane survey तो plane survey पाई हले parallel geodetic survey पाई हले towards the center खाली ऑफलाइन ले सर्वे नेबी जो माने चाहिबो आस परिबो पडिया इन ए सर्वे व्हाट टाइप ऑफ एरर्स रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ precision in determining value in a survey what type of errors represent the range of precision in determining value accidental errors hela theory of probability is applied to which error पढ़िथिला तमर थरे क्वेश्चन रे theory of probability is applicable to systematic error चलो तुम पाई काम नेक्स्ट डिस्कशन में मते आंसर करबे theory of probability is applicable to which type of error accidental error ना systematic error माने कोन गोटे फिक्स्ड पैटर्न अछि अपियर होबार हला माने एरर टा फिक्स्ड पैटर्न गोटे अछि अपियरिंग होबार accidental माने रैंडम theory of probability माने कोन probability माने अनसर्टेन तो theory of probability is applicable to accidental error next 21 calculate the error in mm in the linear measurement of offset if the length of offset is 80 meter then the accuracy in the measurement of the length once मतलब scale दे देछि length दे देछि limiting length of the offset पचाच कौन फॉर्मूला अप्लाई करबो 1 in 60 meter तुमको दे देछि तो error in linear measurement पचाच आगे कौन करियो आगे फास्ट को आरएफ रे कन्वर्ट कर दियो 1/60 1/6000 हे गला कोन आरएफ रे कन्वर्जन हे गला तो आरएफ इनटू 50 केते 80 मीटर 50 एमएम रे देछि तो 80 मीटर इनटू 1000 एमएम दिस विल बी योर आंसर 80 इनटू 1000 बाय 60000 केते होछ आंसर 13.3 13.3 ऑप्शन डी
22. ABCD runs A closed traverse ABCD runs clockwise. The included angle A can be calculated by. Included angle हमें केमिति calculate करिए? Included angle केमिति calculation करिए? देखो आगे फास्ट ड्रॉ करो. सपोज एटा होची A पॉइंट. A रु जो कलो B को. पुणी B रे गोटे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ड्रॉ करो. पुणी B रु गलो C को. नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. पुणी C रु गलो D को. ये होची रन हला क्लॉकवाइज A B C D. तो फास्ट मन देखो ए एंगल हमें केमिति बाहर करबा. ए एंगल टा एटा होची इंक्लूडेड एंगल. ए एंगल टा हमें केमिति बाहर करिए? फोर बियरिंग ऑफ एबी बैक बियरिंग ऑफ एबी फोर बियरिंग ऑफ एबी माने कोथले जीवो? एटा होची फोर बियरिंग ऑफ एबी. बैक बियरिंग ऑफ डी बैक बियरिंग ऑफ डीए. डीए रो फोर बियरिंग कोटा? एटा होची डीए रो फोर बियरिंग. हला बैक बियरिंग कोटा हे जीवो? एटा हे जीवो बैक बियरिंग. तमारे डीए रो बैक बियरिंग रु केते माइनस करले पाइ जीवा इंक्लूडेड एंगल? एबे देखिलो फिगर देखि इजी हे गला कि नै? ताले बैक बियरिंग ऑफ डीए रु फोर बियरिंग ऑफ एबी माइनस कर देले हमें पाइ जीवा कि नै इंक्लूडेड एंगल? ए फिगर देखि एबे आंसर कहि परिबो. तमाने बैक बियरिंग ऑफ तमान को फोर बियरिंग बैक बियरिंग कांसेप्ट क्लियर अछि कि नै? फोर बियरिंग कहा कोनते बैक बियरिंग कहा कोनते? फोर बियरिंग माने फॉरवर्ड डायरेक्शन ले ए रु बी को जाउछोंती तो ए पॉइंट रे नॉर्थ रु जो लाइन टा जाईची सेटा केते एंगल क्रिएट करछि. जदि किछि मेंशन करनी तो सबले होल सर्कल बियरिंग ही नबो. बैक बियरिंग ऑफ डीए माइनस फोर बियरिंग ऑफ एबी. नेक्स्ट 23. The method of leveling in which the height of mountain are found by observing the temperature. Temperature hypsometry. Temperature कौन? Hypsometry. एटा होचे प्रेशर. Hypsometry leveling. प्रेशर हेले barometric. This one is your direct leveling. रेसिप्रोकल लेवलिंग टा होचे कोन? डायरेक्ट लेवलिंग. इनडायरेक्ट मारिबोन. जे पोखरी साइड रे अछि तो इनडायरेक्ट हेयला. रेसिप्रोकल लेवलिंग भी होटे डायरेक्ट लेवलिंग. टेम्परेचर होचे hypsometric, प्रेशर होचे barometric. 24. Which of the following contour represents either hills or ponds? Hills होचे कोन? ऊपर को बड़ी जाइथिबो concentric circle किंतु hills रे कोन हबो? जते हमें भीतर को जिबा एलिवेशन बड़ी जिवो. किंतु पॉन्ड रे कोन ना सेम concentric circle बट बाहरु जदि हमें भीतर को जिबा ताले पॉइंट कमी जिवो. 100 हमरो 99 98 एति होची बेसिक डिफरेंस. त माने कोन हो आंसर? Concentric circle. ऑप्शन ए Concentric कंट्रोल circle. सेविंग concentric circles. जदि तमरो सेम हैला कंट्रोल्स लाइन केबे भी परस्पर को इंटरसेक्ट करंती नै. For they seems to be intersect each other in case of vertical cliff and overhanging cliff. 2023 रे क्वेश्चन पड़तला. जो कैंसिल हेतला सेबे क्वेश्चन पड़तला overhanging cliff क्वेश्चन पड़तला. इंटरसेक्ट करिवे देखा जिवे से माने गोटे पॉइंट रो बाहरला बळी देन सेटा होची वर्टिकल क्लिफ. से माने देखा जिवे इंटरसेक्ट कला बळी देन सेटा होची ओवरहैंगिंग क्लिफ. Which of the 25 which of the following is a misinterpreted disadvantage of plane table surveying? Sir, it is कोटा होची very गोटे costly. disadvantage. Costly, very costly. It is very costly. हला disadvantage ताले प्लेन टेबल लो कोन जेतोळे हमें साइड को जिबा एका संगे हमें ड्रॉ भी करिया तो सेतरे एक्यूरेसी आसीबो नाही. हला एक्यूरेसी जमा भी आसीबो नाही. वेदर क्लाइमेट खराब हला हमें प्लेन टेबल सर्वे करि परिबा नाही. एडवांटेज कॉस्टली होची कोन एटा होची चीप होबो. दैट इज योर एडवांटेज. 26. The number of Answer horizontal कौन cross wires. आंसर पर तुमने कहलो it is very costly. Option C. It is very costly. 26. The number of horizontal cross wires in a stadia diaphragm is
केतरा थाए सेंटर रे गोटे थाए ऊपर गोटे थाए तळे गोटे थाए हला ऊपरटा को हमें कहबा अपर स्टाडिया तळटा कहबा हमें लोअर स्टाडिया आ मझिटा को हमें कहबा क्रॉस एयर तो केटा हला ताले तीनटा स्टाडिया हेरे देखिबो ए बोली आरे ऊपर गोटे तळे गोटे आउ मझिरे गोटे लाइन जाइथिबो एको हमें कहबा क्रॉस एयर अपर स्टाडिया लोअर स्टाडिया इनको दी जन भीतर जो गैप को हमें कहबा स्टाडिया इंटरवल आई स्टाडिया इंटरवल d is equal to ks plus c k होची मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट k रो वैल्यू होची कोन c होची f plus d k होची k रो वैल्यू होची 100 c रो वैल्यू होची 0 जीरो आंसर हला केते 3 27 total session survey notes and observations are recorded total session survey रे हम in electronic notebook सेठी हमें recording करबो 28 इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक for interpolation of satellite data used for monitoring dynamic changes that occur on the earth surface the most suitable orbit for the satellite is कोडा है जोड़ा सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है जीवो इंटरपोलेशन ऑफ द सैटेलाइट डाटा जोटा हम यूज करबा डायनामिक चेंजेस पई सेटा कोड अर्थ सरफेस रे आसीबो दैट इज द मोस्ट सुटेबल ऑर्बिट कोडा है जीवो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट इसु गोटे जेटा क्वेश्चन नुवा क्वेश्चन ता खाली टेस्ट सीरीज थरू जानिबो एकु या पई एक्स्ट्रा पढिबोन जे टेस्ट सीरीज आसी मु जाई के पढिबी सेलेस्टियल बॉडी विषय पढिबी नादिर पॉइंट विषय पढिबी इसु पढिया दरकार नै बस टेस्ट सीरीज थरू गोटे जेटा क्वेश्चन जो मिल जाउ सेति के ना 29 if during a hydrometer calibration test for determination of particle size hydrometer हमें कौन करंती को साइज पार्टिकल कोर्स ग्रेन ना फाइन ग्रेन फाइन ग्रेन और फाइन ग्रेन हमें करंती हाइड्रोमीटर हमर करेक्शन कौन आस्ता है गोटे होची पिपेट मेथड आउट होची सेडिमेंटेशन एनालिसिस दैट इज अ हाइड्रोमीटर सेडिमेंटेशन एनालिसिस से कोच हाइड्रोमीटर कैलिब्रेशन टेस्ट कैलिब्रेशन केमी थाए -5 0 5 15 मेनिसस करेक्शन टेंपरेचर करेक्शन डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन मेनिसस करेक्शन पॉजिटिव डिस्पर्शन होची नेगेटिव आउ टेंपरेचर होची पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव both positive negative so कोच एज sedimentation progress the specific gravity of the suspension decreases the effective depth increases effective depth increases option A 30 in soil mechanics and foundation engineering the ratio of the density of solid to that of the water density of the solid to density of the water ताको हम कोन कहबा relative density स्पेसिफिक ग्रेविटी specific gravity unit weight of the solid to unit weight of the water ओके 31 1250 सेंटीमीटर क्यूब माने वॉल्यूम दे देला 70 सॉइल वॉल्यूम दे देला 1250 10 सेंटीमीटर क्यूब इज वॉल्यूम ऑफ सैंपल voids in which 3 सेंटीमीटर क्यूब इज वॉल्यूम ऑफ एयर ताले 10 एटा क्लास से कराई छी ए क्वेश्चन हला 1250 दे देला vb दे देला तुमको 10 दे देला वॉल्यूम ऑफ द एयर दे देला 3 दे देला हला तो हमको दरकार डिग्री ऑफ द सैचुरेशन होची वॉल्यूम ऑफ द वाटर टू वॉल्यूम ऑफ द void वॉल्यूम ऑफ द वाटर केते हे जीवो 7 हे जीवो एयर जदी 3 हला vb जदी 10 हला ताले वॉल्यूम ऑफ द वाटर हे जीवो 10 - 3 7 7 बाई 10 into 100 70%. The gain in strength thixotropy sensitivity होची कोन undisturbed by disturbed thixotropy होची gain in strength activity होची कोन ip by percentage of play ip by percentage of play plasticity तो जाना अछि ip that is wl minus wp in a consolidation test for practical utility what is the nature of a plot drawn between the void ratio on ordinate
in the natural scale and effective stress logarithmic scale ताको हमें कौन कहबा Straight line. CC 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 होची कौन change in void ratio by log of sigma 1 by sigma naught compression index हेले that is your straight line concave को कैसे है that is your AV रो स्लोप होची कौन decreasing माने logarithmic of effective stress यूज करियो देन पाइबा जो स्लोप ताको हम कहबा AV coefficient of the compressibility CC होची straight line in case of logarithmic coefficient of the compression CC रो वैल्यू केते 0. CC रो वैल्यू for undisturbed soil और disturbed soil for undisturbed soil केते 0. for disturbed soil undisturbed माने 9 disturbed माने 7 Newmark's influence chart IF is equal to 1 by m into n Option D. 1 again. m होचे concentric circle n होचे radial lines Newmark's influence chart is based on the concept of vertical stress is under a uniformly loaded circular area 35 the maximum pressure which a soil can carry without shear failure ताको हमें कौन कहबा Net bearing. SBC कहबा safe bearing capacity the maximum pressure which a soil can carry without shear failure that is your SBC of soil Option the C. maximum option C कौन देछ SBC हो safe bearing capacity option C SBC बा ताको हम कहबा soil bearing capacity 36 differential settlement पचाची आंसर देथिला net safe bearing. नेट सेफ हेले आपन को QNU कथा कहूछ QNU होछ अल्टीमेट काढिबे तापर QNS बाहर करिवे विदाउट फेलियर हेले सेफ बियरिंग कैपेसिटी सुटेबल आंसर होबे नेट सेफ हेले हम पुणी गामा डीएफ को माइनस करबे पड़िबो the maximum differential settlement isolated footing on clay soil should limited to 40 40. हैला क्ले थिले 40 सैंड थिले 25 डिफरेंशियल सेटलमेंट 25. आ जदी आइसोलेटेड फुटिंग थिला सैंड थिले 40 क्ले थिले 65 रैप फाउंडेशन थिले 65. क्ले केते 65 टू 100 सैंड होचे 40 रु 65 play 100. मन रखो तोडा हे जबो ऑप्शन बी 40 नेक्स्ट वन कोचे R1 होची 1.1 37 R1 होची 1.1 R2 होची 1.2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ LR एटा ओडा नुवा क्वेश्चन टा हैला खाली एठी कोन करबो मल्टीप्लाई कर दबो एठी खाली कोन करबो न्यू क्वेश्चन टा एटा होची कोन पेनिट्रेशन टेस्ट ओडा कि सिलेबस नाही बट टेस्टेज वगैरह रे गोटे दिला क्वेश्चन एमते रहबा दरकार R1 देइची R2 देइची LR पचाची LR होची कोन रिकवरी रेशियो that is your L0 into R1 into R2 hello so for R1 होची स्टैंडर्ड वैल्यू L0 केते थाए 20 हेले 1.1 into 1.2 न्यू क्वेश्चन एबो रखिबो शॉर्ट नोट्स रे LR केते हे जिवो ताले 11 into 11 हेले 22 हेले 22 into 1 26 पाठा करथे 26. सब तो 26 4. अछि 26.4 0.2 खाली शॉर्ट नोट्स ए जिंस लिख दबो LR is equal to L0 into R1 into R2 हैला सब जिंस इंपोर्टेंट नुए बट किछि किछि एक्स्ट्रा जिंस ओडा रहउछ शॉर्ट नोट्स जदी रखिबो ताकू जदी एग्जाम रे किछि आसी गला एक्स्ट्रा जिंस सेटा तुमको हेल्पफुल होबो पानिक होबोनी हो एग्जाम रे पानिक होबोनी जेमिति हमें जेतोले क्वेरिंग प्रोसेस करंती स्टोन केस रे क्वेरिंग जेतोले कोन सेतोले हमें कोन कोन एक्सप्लोसिव यूज करंती एक्सप्लोसिव कोन गन कॉटन हे गला डायनामाइट हे गला गन पाउडर हे गला और जदी एग्जाम रे क्वेश्चन पचार देला जे क्वांटिटी ऑफ द एक्सप्लोसिव केते हो एग्जाम रे क्वेश्चन जदी आसी गला फाइंड आउट क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव हां नहीं हेलो हां कोन तो हेलो
से म्यूट कर दियंतु सर से सियाडा कथा हो जंती म्यूट ऑल मार म्यूट करी मार रखो नले क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव जदी क्वेश्चन ले पचार देला तो कौन करिवो क्वांटिटी ऑफ द एक्सप्लोसिव दैट इज योर फॉर्मूला का मन होची क्वांटिटी ऑफ द एक्सप्लोसिव एटा नुवा क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं दैट इज योर एलएलआर डिवाइड बाय 61 ये सब जिंस देखिया दरकार नहीं बड़ एग्जाम में जदी आसी गला एक्स्ट्रा जिंस आ 10 टा क्वेश्चन तो एमिति एक्स्ट्रा रहइबो ही रहइबो जोटा कि तुम केबे सुनी नथिबो केबे देखि नथिबो कोडे चैप्टर आसी थिबो मैनेजमेंट रो पकाई देथिला जेमिति मैनेजमेंट रो पकाई देथिबो आगे तमरो कंसर्न होची जो 90 टा क्वेश्चन तुम एग्जाम रे पढिची जोटा कि टेस्ट सीरीज तुम पाइचो कि कोट ना कोट कांसेप्ट तुम देखिचो सेही 90 टा को टारगेट हला एथरो कट ऑफ लास्ट थर पे कम जाय पारे एथरो जो माने पाइबा को रियली आशा अछि जे एथरो जहा बेले बजेबी एटलीस्ट टिके लास्ट मोमेंट सीरियस हो जाओ एटलीस्ट 80 पर्यंत लागे लोगे कि 80 धरी जाओ 100 धरो कि न धरो 80 एटलीस्ट धरी जाओ 38 A failure of soil when hard slope takes place stratum exists at a considerable depth below the toe such that failure surface is curved at two ends and plane in the middle portion. This is known as co-failure economy. Compound failure. कंपाउंड Compound failure. ହେଲା curved surface ତା ସହିତ ରହିବ flat surface ରହିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା compound failure. Pound failure. ଯୋଉଥିରେ ତମେ କଣ ରହିବ both translational ବି ରହିବ ତା ସହିତ rotational ବି ରହିବ ମାନେ ସିଧା ବି ଯିବ ତା ସହିତ rotational ବି କରିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା compound failure. failure କେତେ ପ୍ରକାର translational failure ସିଧା ସିଧା ଧସି ଯିବ rotational failure ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି Coulomb wedge failure another one is your compound failure. compound ହଉଛି translational ରହିବ ତା ସହିତ rotational ବି ରହିବ. density of 1 liter of liquid that weighs 9 newton 9 newton दे दी तार डेंसिटी पचार डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम हैला डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम Volume. मास देछि कते बा त हमरो 9 न्यूटन का वेट दे देछि माने फोर्स ओड यूनिट माने वेट दे देछि हमको तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास इनटू जी बाय v इनटू जी 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 मल्टीप्लाई कर देली तो ऊपर हे गला वेट बाय v इनटू जी ताले डेंसिटी इज इक्वल टू वेट क्वेश्चन देछि 9 हैला बाय वॉल्यूम देछि केते 1 लीटर जे 1 मीटर क्यूब जे 1000 लीटर Liter. 1 लीटर हे जिवो केते 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब ताले बाय हे जिवो 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब इनटू जीरो वैल्यू होछि केते 9.81 तो एटा हे जिवो आंसर केजी पर सेंटीमीटर क्यूब देछि मीटर को पुणे अगेन सेंटीमीटर कन्वर्जन कर दो 9 बाय 10 टू पावर -3 और 9 इनटू 10 टू पावर 3 बाय 9.81 कितना आसन सर मीटर क्यूब टर्म सीधा कटि गला सेंटीमीटर कटि गला 917 आउट होची 977 9 बाय 9.81 आसलानी तो 1000 तो केबे हबोनी 917. 917 917. The difference of pressure between the inside and outside of a liquid drop उटे मन रखिबो जेट उटे मन रखिबो हैला प्रेशर इनसाइड ड्रॉपलेट हेले P is equal to 4 sigma by D प्रेशर इनसाइड जेट हेले 2 sigma by D प्रेशर इनसाइड स्लो बबल हेले 8 sigma by D मन हैला फास्ट होजी कोन ड्रॉपलेट फास्ट होजी ड्रॉपलेट pressure is equal to 4 sigma by D. Next one is your jet. Pressure is equal to 2 sigma by D. Next one is your soap bubble. 8 sigma D. Soap bubble. P is equal to 8 sigma by D. ହେଲା क्वेश्चन पाइबो या भितरु सीरियली ट्राई करियो मन रखिया पे तो एटा कोन हिजबो एठी r टर्म से देछि डायमीटर हो जे d इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r मल्टीप्लाई कर दो 2T by R. 2t by r
Next 41. A longitudinal rectangular surface is hanged. Longitudinal rectangular surface is hanged into the water such that its top and bottom points are at a depth of 1.5 ଆଉ 6 ମାନେ ପାଣିରୁ 1.5 ରେ ଅଛି ଦେନ୍ ଏଟା ହଉଛି 6 ରେ ଅଛି 6 ରେ ଅଛି ମାନେ ଏଟା ଆମେ ଅଧା ପାଇଯିବା କେତେ 3 ପାଇଯିବା ଟୋଟାଲ x ବାର ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 1.5 ହେଲେ ଏଟା 3 ହେଲା 4.5 ହେଇଯିବ ତମର x ବାର ମାନେ यार ଅଧା ରୁ ନେଇକି सरफेस ପାଣିର सरफेस ନେଇକି यार ଅଧା 3 plus 1.5 4.5 ପାଇଗଲ HCP ପଚାରୁଛି କି the depth of the center of the pressure ପଚାରୁଛି HCP ର ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି କଣ x ବାର plus IG sin square IG theta by ଯେହେତୁ X. ଯେହେତୁ ତମର longitudinal rectangular surface ଅଛି ତ theta ର value ଏଠି କେତେ ନେଇଯିବ sin square theta ମାନେ sin 90 ଯେ 1 ହେଇଗଲା ତ ଖାଲି IG ହେଇଯିବ by a into x bar ଏଟା ହେଇଯିବ ତମର center of the pressure କେତେ ବାହାରିବ ତମର IG value କେତେ BDQ by 12 B into D ର Q by 12 6 ଦେଇଛି width କେତେ ଦେଇଛି depth ଦେଇଛି 1.5 the depth of the center of the pressure ପଚାରୁଛି ହେଲା तो BDQ by 12 पके दबो in case of the rectangle x bar तुम पाई गलो x bar केते होची बाहर कर दियो केते बार आंसर 4.2 sir. 4.2 ऑप्शन डी क्वेश्चन एटी कौन देची क्वेश्चन बी केते देची हमको क्वेश्चन रे बी केते देची 1.5 1.5 कोड देची बी 1.5 बी depth हमको देची डेप्थ देची एटा ना सर 1.5 6.0 जो जिनस देनी ता पई ओरिड हवा दरकार नहीं से जिनस कटि गला b into d रो q by 12 ହେଲା एटा କରି दउची देखो क्वेश्चन कौन देची एटा होचे पानी रो सरफेस longitudinal rectangular surface is hanged into the water such that its top and bottom points are at a depth माने कोन पानी रु एतिक डेप्थ रे अछि ता माने टॉप पॉइंट हो एटा होचे मोर रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल टा टॉप पॉइंट रु अछि 1.5 रेक्टेंगल टा टॉप पॉइंट रु अछि 1.5 आ बॉटम पॉइंट टा रेक्टेंगल रो पानी सरफेस रु केते अछि 6 रे अछि 6 रे अछि माने मते कहलो रेक्टेंगल रो डेप्थ बा हाइट टा केते हो 4.5 होबो कि नहीं देखो 1.5 4.5 है 1.5 माइनस है जो 1.5 खाली माइनस कर दो 4.5 है ताले रेक्टेंगुलर विड्थ हमको देइनी ताले i हे जो केते bdq by 12 b into 4.5 रो q by 12 एटा हे गला i जोटा न देछि किछि ओरिरा दरकार सब रखि दियो देखियो कटि दियो निहां क्वेश्चन केबे भी जेई रे हार्ड आसीबोनी किछि ना किछि अननोन अछि माने से कटि जिवो ऑटोमेटिक हैला देन x bar is equal to केते बाहर करबा x bar is equal to 1.5 plus 4.5 by 2 1.5 plus 4.5 by 2 3.75 as जो तुम्हारे x bar ता पुट करो खाली वैल्यू रे 3.75 x bar plus ig माने b into 4.5 रो q by 12 into तळे रहला एरिया जगह में लिखि पारियो कि नहीं b into d होउची केते 4.5 into a into x bar 3.75 देखो एटे b कटि गला कि नहीं आज्ञा बस पाई गलो आंसर Next 42. If mercury in a barometer is replaced by water, P is equal to rho GH apply कर दो खाली height पचाच the height of the 3.75 centimeter of mercury will be following the dash centimeter of the water दी जनकर डेंसिटी हमको जଣା अछि जनकर जवा रिलेटिव डेंसिटी हमको जଣା अछि जनकर होउछ केते 13.6 into the height दे 3.75 आउ जनकर केते हे जो 1 13.6 into 3.75 हे जो तुम्हारा आंसर 16 3 48 हेले 50 पाखा पाखी हो 13 point
କେତେ 51. ଆସୁଛି 51 ଅପସନ ଏ 51, sir. नेक्स्ट कौन द resultant velocity of a fluid particle at 2 1 3 at a time t is equal to 1 for a velocity vector ଦେଇଛି 4x3 i I cap plus 10x square y j cap plus 2t k cap velocity vector तुमको दे देछि हला देन क्वेश्चन कोन पजाउछि 2 1 3 माने x होउछि 2 y होउछि 1 आउ t रो वैल्यू देछि तुमको 3 बोली दे देछि ताके वैल्यू पुट कर दे वेलोसिटी केते बाहरछि 4 into 2 रो q 2 रो q केते हे जिवो 32 832 32y प्लस 10 into 2 रो स्क्वायर into 1 10 into 2 रो स्क्वायर into 1 2 रो स्क्वायर हेले 4 10 हेला 40 हे गला एटी प्लस अछि ना माइनस अछि छाड़ देछन बोले 4x3i तापर आ कुछ देनी 40 जे प्लस 2 into टाइम केते अछि टाइम अछि 1 प्लस 2 के जे कोन से वेलोसिटी वेक्टर i कैप j कैप k कैप आसीवाला ताले वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड कोन होई जिवो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रो रूट ओवर 32 रो स्क्वायर प्लस 40 रो स्क्वायर प्लस 2 रो स्क्वायर रो रूट ओवर एती खाली काढिया अछि 32 स्क्वायर होले 1024 1600 प्लस 4 रफली कैलकुलेशन करियो 1600 ये 1000 2628 2628 हेले पाखा कोन आसीबो 25 50 हेला को आसुची 2500 माने 51 आउ 51.26 यूनिट Sir, ଖାଲି ମାନେ value ଟା ପଡିବ ତାର ମାନେ ଯୋଉ 213 ଦେଇଛି ସେଟା x y z x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है 1,1 यार माने कोन x होची 1 y होची 1 हमें कोऑर्डिनेट को लेखंदी केमिति जेमिति हम लेखंदी 1,2 त माने x होची 1 y होची 2 तो ऑलरेडी तुमको वैल्यू देछि इक्वेशन देछि ताको लगे पुट करिवो एठी देछि x, y, t next a body is said to be provided optimum amount of streamlining when profile drag एटा हो तुमरो प्रोफाइल drag force आउ lift force fd into rho into al that is your drag force समथि lift force भी fl है lift force कोडी काम करे एयरप्लेन ने काम करे lift force 45 the condition for the maximum discharge होचे 0.95 maximum velocity ले 0.81 मन रखियो small d by capital D maximum discharge ପାଇଁ 0.95 maximum velocity ପାଇଁ 0.81 ହେଲା small d capital D कोन सब total capital D माने diameter of the sewer small d होचे पानी केते अछि that is your small d so small d by capital D जले 0.95 हो that is the case of the maximum discharge 0.81 हेले that is the case of the maximum velocity तो maximum discharge पचाची माने 0.95 को सीओर टा भलो एग शेप्ड सीओर टा सबटु भलो कारण सेतिरे हमें भलो सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी पाई थांती सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी केते 0.75 मीटर पर सेकंड 46 पोटेंशियल इवापोर ट्रांसपिरेशन और पीईटी 1 माइनस एईटी बाय पीईटी को कोन कोनती एरिडिटी इंडेक्स पोटेंशियल इवापोरेशन मेजर करे पे जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करती बा इवापोर ट्रांसपिरेशन मेजर करे पे ताको हम कोनती लिसीमीटर The potential evapotranspiration represents the combined loss of water through what? दीटा स्टेटमेंट देछि गोटे कहउछि the plant's process of transpiration via its vascular system आउट स्टेटमेंट 2 कहउछि evaporation of water from the earth surface कोटा बो evapotranspiration माने कोन evapotranspiration माने होछि जो भी ट्री गोटे अछि ट्री रो पत्र रु हमर ट्रांसपिरेशन हबा द्वारा से गछडा जोटी अछि तार सराउंडिंग सॉइल भी इवापोरेशन होतबो पानी रो तो सेति पय से प्रोसेस कोन कहै इवापो ट्रांसपिरेशन ता माने अर्थ रु भी इवापोरेशन हबो आउ जो वास्कुलर सिस्टम अछि जो भी हमर हे गला
कौन हला लीफ रो जो पानी हमर कौन हबो ट्रांसपिरेशन हबो ता प्लांट रो हबो ट्रांसपिरेशन अर्थ रो हबो इवापोरेशन ता माने दीटा को स्टेटमेंट ठीक अछि कि ताको हमें कहबा पोटेंशियल हबो ट्रांसपिरेशन तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू प्लांट ट्रू हबो अर्थ भी हबो 47 a line draw by joining different point is सर called वन स्टेटमेंट टा आउथरे बुझे देबे one कहुची the plants process of transpiration via vascular system होची गछर दीटा सिस्टम अछि बायोलॉजी जदी पढिथिबो गोटे होची जाइलम आउट होची फ्लोएम सेही सिस्टम को कहै छै vascular system जाइलम होची कहा पई फूड ट्रांसपोर्टेशन पई हला फ्लोएम होची कहा पई पानी पई गोटे फूड पई गोटे पानी पई गोटे जाइलम आउट फ्लोएम जाइलम ता बोधे पानी पई आउ फ्लोएम ता बोधे खाद्य पई तो सेही जो सिस्टम टा को कहै छै vascular system माने रूट रू नेकी गछर पत्र पद्म जो पानी जीवो आज्ञा मतलब हमर ओडिया रे जो माने ओडिया मीडियम थिबो आलोक श्लेषण मन अछि फोटोसिंथेसिस से आज्ञा आलोक श्लेषण बाहर हमर ग्लूकोज C6H12O6 47 a line draw by joining different point is called at which the same amount of rainfall isoheight Isohydrate. same amount of rainfall hela isoheight method option D runoff increases with runoff केमिति बढ़िबो increases in intensity of rain जेते हमर वर्षा अधिक हबो runoff से तो अधिक हबो कारण इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी अचीव कर दबो आउ सॉइल इनफिल्ट्रेशन हबो 49 read the following statements in canal irrigation the duty of water can be improved by duty माने कोन duty माने होची by providing by supplying the 1 meter cube per discharge रो 1 meter cube per second रो discharge दबा द्वारा से जेते एरिया को इरिगेट करि पाला तापन कहबा duty duty is equal to a by q factor per q में कोन आंसर canal irrigation the duty of the water can be duty को हमें केमिति बढ़े परिबा सब स्टेटमेंट पढ़ो the channel should be in sandy soil हेले इनफिल्ट्रेशन अधिक होई जीवो कि नहीं हेले ऑप्शन 1 तो कटियो सर ऑप्शन 2 कोन कहूची proper maintenance of water course and the proper maintenance and outlet कौन लिखा है outlet हवा କଥା outlet pipes will also help reduce losses option 2 ठीक अछि option 3 कहूची volumetric assessment of water makes the farmer to use water economically option 3 भी ठीक अछि option 3 भी ठीक अछि कि नहीं हमें जदि लिमिटेड पानी फार्म को दबा से ताको भलसे यूटिलाइज करिवो तो 2 या 3 ऑप्शन सी 3 नंबर एटे कोइ देबे 3 नंबर से कहूची volumetric assessment of water makes the farmer to use water economically हमें जदि गोटे फार्मर को जेति दरकार सेति जदि पानी ताको सप्लाई करि पाउछन देन से ताको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करि परिबो तो एटा ठीक स्टेटमेंट अछि 50 the spacing between adjacent spurs in river training work is generally kept between dash times the spur length spurs कौन spurs ये टर्म टा कौन spurs ग्रायन्स ना सुनछो नदी मानकर देखिछो नदी मानकर देखिछो कि हमर जोठी हमर हीराकुद डैम वगैरह अछि सेठी जले पानी जोठी रिलीज होउची सेठी देखिबो गोटे गोटे स्ट्रक्चर एमिति नदी भितर को हेतिबो आ गोटे गोटे जगह एमिति हेतिबो आ गोटे गोटे जगह एमिति हेतिबो एको में कहते ग्रायन हला एको में कोन कहबा ग्रायन्स होची एम्बैंकमेंट टाइप स्ट्रक्चर एटा कोन ट्रांसपोर्ट डायरेक्शन ले हमें कंस्ट्रक्शन करथान फ्लो को कंट्रोल करे पई से कोई से स्पेसिंग टा केते रहिथा 2 रु नै कि 2.5 2.5 तो स्पेसिंग दा सेम रहइबो कि स्पोर आ ग्राउंड्स रे हां सेम रहइबो एठी हम स्पोर्ट्स जहां ग्राउंड से सेटा ऑल्टरनेटिव मानी चलछ तेरा को सेम लाइक स्ट्रक्चर टेम्परेरी स्ट्रक्चर से परमानेंट स्ट्रक्चर
परमानेंट स्ट्रक्चर बट दी जंग काम सेम सेति पई स्पोर्ट्स और ग्राउंड्स को दुटा को सेम मानि चलछ आज्ञा which of the following statement is true for linear reservoir पई कोटा ठीक Storage is proportional to outflow discharge. storage is proportional to outflow discharge s is equal to kq तो टर्म्स दिबो s is equal to kq k होचे storage coefficient q होचे कोन discharge बा outflow the storage is proportional to outflow option b which of the following methods uses dead furrows on cropped farms for drainage of excess irrigation or rainwater Bedding, sir. bedding बेडिंग ड्रेनेज को भलसे ड्रेनेज को इंप्रूव करबा ड्रेनेज को इंप्रूव करबा जोटी वाटर लॉन्ग वगैरह हे गला ताको रिड्यूस कर परिबा हम सील्ड इजेक्टर इज प्रोवाइडेड 53 सील्ड इजेक्टर इज प्रोवाइडेड क्रॉस ड्रेनेज वर्क In the canal, in the head reach. इन द कैनाल इन द हेड रीच हला ओयाटा को फिश लैडर टा कोन पे प्रोवाइड करंती फिश लैडर This one, survival. ମାଛ जदि ମାନଙ୍କ आमे ପାଇଁ को माछ मानको पई खाद्य दवा सेडी फिश लैडर आमे कोन पे प्रोवाइड करबा जे जदि आमे पानी को ब्लॉक कर रखुचंती तो गोटे जगह पानी जेतोले स्थिर हे जिवो स्टील हे जिवो से जगह टेम्परेचर कमी जिवो जदि ठंडा दिन रे कोन हला गोटे पानीटा मूव न करी स्थिर हे जाउची तो तळे जो माछ मान रहले तांकर सर्वाइवल पई डिफिकल्ट हे जिवो सेते पे आमे कोन कोन फिश लैडर प्रोवाइड करते सो दैट कि जो माछ बंची पाला बंचीबो जे न बंची पाला एटलीस्ट ता पई एस्केप रो गोटे बाटो थाउ सो दैट कि नले माछ माने मरि न जान नले आमे कोन खाइबा का 54 In the last 3 decades, the population of a city was recorded 20,000, 30,000, 40,000. What will be the population for which a water supply system should be designed if it should be adequate for next 2 decades? कौन करियो? Pn is equal to P naught plus Plus n n into x bar. X bar. n x bar 1000, sir. ହେଲା केते आसे 1000 10,000 60,000. सर 60,000. कम आगे फास्ट को एवरेज केते होचे 20,000 और 30,000 केते बढ़िला 10,000 20,000 थिला 30,000 हला केते बढ़िला 10,000 पुणे 30,000 थिला 40,000 हला केते बढ़िला 10,000 10,000 ताले तो x बार काटी दो कि ना एवरेज इंक्रीज केते 10,000 10,000 प्लस 10,000 बाय 2 जे 10,000 नंबर ऑफ द डिकेड्स केते देछि 2 decades नेक्स्ट 2 डिकेड्स माने n केते हे गला 2 हे गला लास्ट नोन पॉपुलेशन कोडा 40,000 ताले खाली फॉर्मूला अप्लाई करियो pn इज इक्वल टू p नॉट माने 40,000 प्लस 2 इनटू 10,000 हे वाला 60,000 सर किछि फॉर्मूला पता नथिले अरिथमेटिक पकेबो सर आपको किछि न देथे थोड़ा बेसिक जिंस अप्लाई करिए अरिथमेटिक कारण अरिथमेटिक फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर द ओल्ड सिटी आगुरो जो हमें सिटी करूथिले सेटा होची अरिथमेटिक फॉर्मूला तो अरिथमेटिक फॉर्मूला होची बेसिक फॉर्मूला क्वेश्चन में किछि देइन माने अरिथमेटिक प्रूव करियो 65 in which one of the following industries the water requirement in kiloliters per unit of production is very high Paper industry. पेपर इंडस्ट्री पेपर इंडस्ट्री सबुठु अधिका पेपर इंडस्ट्री सबुठु अधिका 56 bacteria which consume organic matter as source of carbon and energy are known as chemioautotropic chemical energy यदि यूज करले that is your Nice. chemioheterotropic Heterotropic. हला algae bacteria symbols is observed in symbiosis Stabilization pond. algae bacteria symbiosis stabilization pond oxidation pond टा कोन aerobic ना anaerobic Aerobic. aerobic Oxygen.
ऑक्सीडेशन पॉइंट होची एरोबिक सेप्टिक टैंक एनारोबिक एरोबिक माने ऑक्सीजन प्रेजेंस रे एनारोबिक माने ऑक्सीजन एब्सेंस रे 58 ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑफ कैपेसिटी देची 1 मीटर क्यूब पर सेकंड ये होता कैपेसिटी हैज फिल्टर बॉक्सेस फिल्टर अछि जार डायमेंशन होची 6 into 10 load in gate to the filters is 120 meter cube per day per meter square loading rate it has loading rate to the filters is 120 meter cube per day per meter square when two of the filters are out of the service for backwashing the loading rate केते पचाउची आगे फास्ट एरिया बाहर कर दियो एरिया केते होची 6 into 10 60 हे गला मीटर स्क्वायर एरिया हैला ताले सरफेस एरिया केते हे जीवो आगे फास्ट को कोन करबो यूनिट को इक्वल करबो मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर अछि एठी अछि मीटर क्यूब पर सेकंड अछि ताले एथे जदि हमें हरि दबा कोन पाइ जीवा एरिया पाइ जीवा कि नहीं देखिलो हाइड्रोलॉजी आ एनवायरनमेंट सब ट्राई करबो यूनिट साहाय्य रे क्वेश्चन को सॉल्व करियो 1 मीटर क्यूब पर सेकंड अछि 1 मीटर क्यूब पर सेकंड एटा होछि 120 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब तो रहिला पर दिन को हमें कोन करिया 24 घंटा जे 1 घंटा 60 मिनिट पुन 60 सेकंड माने इनसे मल्टीप्लाई कर दबा 24 into 60 into 60 टोटल एरिया हमें पाइ जीवा 24 into 60 into 60 divided by 120 केते होछ देखो 100 करले 2 काटले 30 720 720 मीटर स्क्वायर 720 मीटर स्क्वायर एटा हेला कोन तमर टोटल एरिया टोटल गोटे एरिया फिल्टर एरिया होछ केते 60 गोटे फिल्टर एरिया होछ 60 ताले केटा फिल्टर लागिवो 12टा 12टा फिल्टर लागिवो 12टा फिल्टर से कोची when two of the filters are out of the service ताला केटा हला 10टा 10टा फिल्टर हेले टोटल सरफेस एरिया केते हे जाउची 60 into 10 600 मीटर स्क्वायर ताले बे लोडिंग रेट काढी परिबो आज्ञा 144 144 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर यूट्रोफिकेशन माने कोन जो दଳ ହେଇଯିବା algae ହେଇଯିବା माने जो फॉस्फोरस वगैरह जो माने सॉइल रे जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट अछि जदी सेटा आसी कि पानी रे मिसी जाए हला तल से कोन करिवो गुटे खाद्य भली काम करिवो algae मानन को पई सेति पई से जो माने कोन कहंती निजरो फोटो साम कोन फोटोसिंथेसिस करंती सनलाइट को यूज करी कि आ दଳ टाइप रो हो जाए से प्रोसेस को हो जाए यूट्रोफिकेशन तो यूट्रोफिकेशन तले रिलेटेड टू कोन हबो फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट्स excessive quantity of phosphorus 60 an experiment shows that a concentration of नाइट्रोजन हबन नाइट्रोजन केमिति हो नाइट्रोजन तो रहला तमरो सॉइल रे ये होचे यूट्रोफिकेशन माने एटी कोठी हो लेक रे आज्ञा यूट्रोफिकेशन टा कोठी होई थाए लेक रे होई थाए ना नाइट्रोजन आसी के पानी रे मिसी परिबो थोड़ी नाइट्रोजन हबो कोन राइबोसोम कोन करिवे नाइट्रोजन फिक्सेशन करिवे नाइट्रोजन फिक्सेशन करिके से फास्ट NO3 NO2 करिवे NO3 करिवे NO3 होची कोन नाइट्रेट ता जदी पानी रे मिसिबो नहले ना NO2 तो मिसी परिबोनी NO2 न रहया कथा नाइट्रेट जदी रहला 45 मिलीग्राम पर लीटर जदी अधिक हला देन दैट कैन कॉज योर मिथामो कोन थिला से डिजीज ना ब्लू बेबी सिंड्रोम बेबी रो देह नीला पड़जो मिथामो ग्लोबानेमिया यूट्रोफिकेशन आज्ञा phosphorus an experiment shows that a concentration of 0.1 gram per meter cube of free available chlorine yield a 99% kill of bacteria in 8 minutes हैला calculate disinfection rate Chick's law माने NT Chick's law होची कोन NT is equal to initial n naught into e to the power minus kt ताको मतलब Chick's law
8 मिनिट ऑफ क्लोरीन एक्टिवेशन आफ्टर 8 मिनिट माने n of 8 equal to n naught into e to the power minus k into t टाइम होचे 8 तो क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट k विषय पचारछ कोन करिवो 99% किल ऑफ बैक्टीरिया इन 8 मिनिट 8 मिनिट रे 99% बैक्टीरिया को मारी देला ताला रहिला केते 1% रहि गला कि नहीं 1% माने केते रहिला 0.01 0.01 01 माने 0.01 of n naught equal to n naught into e to the power minus k into 8 n naught कटि गला e to the power minus k into 8 is equal to 0.01 e उठा पहला में कोन करिया उभय पटे log कर दो तो k रो वैल्यू केते बाहर करियो e to the power e को जदि हमें हटेबा देन कोन हो जिवो minus k into 8 is equal to उभय पटे logarithm नै जिवो logarithm माने log of 0.01 1 by 100 माने log 1 minus log 100 log 1 जे हे गला 0 minus log 100 जे हे गला केते 2 हे गला हैला log 100 जगह ते 10 log स्क्वायर 2 log 10 रे 2 हे गला 0 minus 2 minus minus कटि गला k is equal to 2 by 8 है माने 1 by 4 मोटा मोटी 0.3 पाखा के आसी 0.3 पाखापाखि आसो 0.47 आंसर सर 57 थिला बोधे 5756 आज्ञा 0.01 into n naught is equal to n naught into e to the power minus k into 8 एकोटे कैलकुलेटर सॉल्व कर देखलो ई वैल्यू रे पकेयो केते आसी एग्जैक्ट आंसर कारण हमें कोन करले लॉगारिथम नै गले फॉर इजी कैलकुलेशन एग्जैक्ट आंसर हले ई वैल्यू रे पकेयो n naught कटि गला e to the power minus 8k equal to 0.01 एक्चुअली e टर्म जोड़ी थाए सेठी log आसे नि ln आसे हैला ln ऑफ बेस 0.01 तो इजी कैलकुलेशन पई तमे लॉगारिथम भेल बट एठी तो एग्जैक्ट आंसर मांगी छी सेते पई को कैलकुलेटर पकाबे पड़ी रफ कैलकुलेशन करे पई 0.47 बा 5 पाखा भी पड़े एग्जैक्ट आंसर बट मे बी 0.5 से नस्ती चेक कर दो e होची रिलेटेड टू ln प्रोसेस ए प्रोसेस में सॉल्व हो 6 लॉ माने nt is equal to n naught into e to the minus kt 61 the type of valve which is provided on suction pipe in the tube wells वो valve हमें यूज करते tube well reflux valve रो अन्य ना कोन नॉन रिटर्न valve हां आउ जन किजन कहले चेक valve सेटा भी चेक valve non return valve reflux valve retention valve सब इम्पोर्टेंट है माने वन डायरेक्शन ना allows flow in one direction backward आउ होबो ये क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन है डाइल्यूशन डिसॉल्व ऑक्सीजन इनिशियल माइनस फाइनल इनटू डाइल्यूशन फैक्टर डाइल्यूशन फैक्टर तो क्वेश्चन ऑलरेडी तुमको दे दीची 5 ppm तो 5 into 100 by 2 250 which of the following are formed from other pollutants गोटे होचे प्राइमरी पोल्यूटेंट आउट होचे सेकेंडरी पोल्यूटेंट ये समस्त होचे प्राइमरी बट एटा होचे कोन पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट ये होचे सेकेंडरी पोल्यूटेंट ओजोन होचे गोटे सेकेंडरी पोल्यूटेंट फोटोकेमिकल स्मॉग होचे गोटे सेकेंडरी पोल्यूटेंट ग्रीन हाउस पाई के रेस्पोंसिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग बा ग्रीन हाउस पाई के रेस्पोंसिबल क्लोरोफ्लोरोकार्बन जोटा कि कोड था रेफ्रिजरेटर बा फ्रिज बा एसी मान को लागि थाए क्लोरोफ्लोरोकार्बन आउटे कार्बन मोनोऑक्साइड मेनली कोड बाहर था ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट 64 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
ଆଉ जो हमर जो लागि थाए जो कार्बन मोनोऑक्साइड को देमे रिड्यूस करिया को चाहिबा देन हम लगे परिबा कैटालिटिक कन्वर्टर गाड़ी रो इंजन ले टू रिड्यूस द कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन 64 को कंसीडर द फॉलोइंग 53 स्टेटमेंट टा सर बी टा हैला तो 63 ध्यान क्वेश्चन तो also completely पढ़ियांती pollutants by chemical reaction in the atmosphere are not directly emitted हां एटा तो हम सेकेंडरी ना PAN पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बाकी सब तो किछ हबन ना CO2 हबनी SO2 हबनी CO हबनी कारण सब प्राइमरी जाउछन सेकेंडरी माने कि दीटा जिंस मिसी के आउट जिंस तयार हेतियो जेमिति O2 प्लस नासेंट ऑक्सीजन O मिसी के तयार होला O3 ओजोन ओजोन लेयर रहबो स्ट्रेटोस्फियर रे 10 रु नेकी 50 किलोमीटर Consider the following statements. Noise pollution is additive on a logarithmic scale. Noise propagates differently in different media. Which of the above statement true କହିଛି? କୋଉଟା true ପଚାରିଛି? କୋଉଟା true? Noise pollution additive on logarithmic scale. ଯଦି noise pollution ଦେଖିବ log scale ରେ ଆମେ sound को represent କରନ୍ତି. ହେଲା sound को logarithmic scale ରେ ଆମେ represent କରନ୍ତି. ଠିକ ଅଛି ଏଟା. Next ହଉଛି noise propagates differently in different medium. Solid ରେ ଅଲଗା ଆସିବ, liquid ରେ ଅଲଗା ଆସିବ, gas ରେ ଅଲଗା ଆସିବ. Option 2 ବି ଠିକ ଅଛି. Minimum sound କେତେ per year? 20 हर्ट्ज ରୁ ନେଇକି 20 किलो हर्ट्ज. किलोवाट्स 20 हर्ट्ज ରୁ कम हेले किए सुनि परिबो? 20 हर्ट्ज ରୁ कम हेले अधिका हेले बादुडी सुनि परिबो. कम हेले किए सुनि परिबो? हाथी. Human. ह्यूमन होचे 20 हर्ट्ज नेकी 20 किलो हर्ट्ज एटा होचे हमर रेंज ता तळु खले हम सुनि परियन ता ऊपर खले हम सुनि परियन हाथी आ बादुडी केवल सुनि परिबे 65 according to the recommendation of Nagpur 7 conference the wheat formation कोन बडा 7 7.9 7.9 7.9 मन रखियो नागपुर लखनऊ बॉम्बे 20 year plan 43 ରୁ 63 फास्ट नागपुर स्टार एंड ग्रिड पैटर्न 66 on a circular curve the rate of super elevation E while negotiating the curve vehicle comes to a stop it was observed that the stopped vehicle is sliding inwards in radial direction एटा को क्राइटेरिया E कौन हबो greater than F ना less than F सर्कुलर कर्व गुटे अछि सर E greater than F E greater than F सर्कुलर कर्व अछि एटा सर्कुलर कर्व होला सर्कुलर कर्व रे हम मूव करछु माने हम पाखरे सुपर एलिवेशन आसीबो कारण सुपर एलिवेशन न रहले गाड़ी उल्टी पड़िबो बाहर ऊपर बाहर जो आउटर जो टायर अछि ता ऊपर अधिक प्रेशर पड़िबो से कहूचे रेट ऑफ सुपर एलिवेशन इज E रेट ऑफ सुपर एलिवेशन जदी हला E while negotiating the curve vehicle comes to a stop it was observed that the stopped vehicle is sliding inwards stopped vehicle टा कोन होची भीतर को स्लाइड करूची स्टॉप हमरो stopped जो गाटा हमर ठिया हेची भीतर कोन करछ स्लाइड करूची स्लाइड करूची माने सेठी फ्रिक्शन कमी जाईची आर यू एग्री स्लाइड करूची कोन पय जदी फ्रिक्शन अधिका थिबो स्लाइड करि न थाना गाटा ठिया हेक रहि थांदा बट स्लाइडिंग करि जाउची माने फ्रिक्शन कोन हेची कमी जाईची ता माने सुपर एलिवेशन इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन बस पढी के ताको बुझिबार थिला ता माने उठाणीटा फ्रिक्शन टू एते अधिका कि गाड़ी ठिया हेक रहउनी गाड़ी फसी आसुची फ्रिक्शन कमी जाईची E इज ग्रेटर देन F 67 As per IRC recommendation for stopping side distance 30 km per hour design speed is meter IRC रो टेबल बन रखियो ऑटोमीटर 20 ପାଇଁ SSD होची 20 25 ପାଇଁ 25 30 ପାଇଁ 30
40 ପାଇଁ 45 50 ପାଇଁ 60 ବାସ୍ ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ। ଗୋଟେ 30 ଦେଇଛି 30 ପାଇଁ 30 30 ଅପସନ ଏଟା if ଫର୍ମୁଲା the ରେ difference between ଫର୍ମୁଲାରେ ପୁଟ୍ କରିବେ ଯୋଉ SSD ଫର୍ମୁଲାରେ 0.2778 V into TR plus V square by 254 F plus or minus S lag distance braking distance ହେଲା ଆମକୁ ସ୍ପीड ଦେଇଛି रिएक्शन टाइम 2.5 पके देबो बट हमको F जणा नाही कि S जणा नाही स्पीड अनुसार जदी पकेबो S हमको जणा नाही तो एटा IRC रेकमेंड करूची जे जदी एतिकी स्पीड होइला हम एतिकी देई परिबे एटा खाली काढी देव केते मारुची 0.2778 into 30 V into TR होची 2.5 सेकंड ए वैल्यूटा केते होउची 20.835 20.835 835 ସେଇ ପାଖାପାଖି ଆସୁଛି 20.835 କଣ ବାଲା ଲାଇଭ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାଲା ପ୍ଲସ୍ ପୁଣି ବ୍ରେକିଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଡ୍ କରିବ ପୁଣି 30 ର ସ୍କୋୟାର ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 254 इनटू f କେତେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରିବ ଯେହେତୁ ଏଠି SSD କେସ୍ ହଉଛି ଲଙ୍ଗିଚୁଡିନାଲ ଫିକ୍ସନ ନା ଲାଟରାଲ ଫିକ୍ସନ ଲଙ୍ଗିଚୁଡିନାଲ ଫିକ୍ସନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ 0.35 एको पुणी बाहर करियो 0.35 सेही देखियो पाखापाखि আছে 30 पाखापाखि আছে 30.95 सर केते हला 30.95 सर टोटल वाला 30.95 आज्ञा 30 से 30 पाखापाखि আছে तोटा आईआरसी ଆଜ୍ଞା। रेकमेंडेशन कर एई भली बाहर करी तो 68 69 average illumination on important roads as per IS recommendation is 30 lux 30 lux while planning 70 while सर planning on 67 ଛାଡ଼ିଦେଲେ sir 67 ଛାଡି ଦେଲେ 67 ବା କଲେ 68 sir Oh, 68 degrees. If the difference between the edge of the pavement, जोटा कि होचे 18 meter wide, and its crown is 30 centimeter, then the camber पचाची in the pavement. Camber केते नबो? H is equal to W by 2n मने अछि. 2L Wide दे देछि. n काढी परिबो. Crown दे देछि 30 centimeter. n काढी परिबो. आ एटा होचे कोन 1 in n. Height of the crown is equal to W by 2n. 70. While planning on locating major routes in a city, which one of the following traffic survey schemes is most relevant? origin and destination Origin, destination study. Option B. original destination ତମମାନେ ତ ସବୁ answer Sir, କରିଦଉଛ then 69 test series ରେ sir. କାଇଁ ମାର୍କ ଆସୁନି କରିବା ତମମାନେ ତ ସବୁ answer କରିଦଉଛ test series ରେ କାଇଁ ମାର୍କ ଆସୁନି test series ରେ କାଇଁ ମାର୍କ ଆସୁନି ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲି କାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖିଲି କେତେ କଣ ସବୁ ମାର୍କ ରଖୁଛ ହାଇଏଷ୍ଟ ଯାଉଛି 80 ଏଇଭଳି ସବୁ ପଢୁଛ କେତେ ଦିନ ରହିଲା ଆଉ ଏକ୍ସାମ 40 ରୁ ହାର୍ଡଲି 40 ରୁ 50 ଦିନ ତମମାନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100 କ୍ରସ୍ କରୁନି ସେ ପୁଣି ହାଇଏଷ୍ଟ ମାର୍କ 80 ହାଇଏଷ୍ଟ ମାର୍କ 80 ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ହାଇଏଷ୍ଟ ରଖିଲେ ସେମାନେ 150 ସେ ପୁଣି କମ୍ପିଟିସନ 150 160 ये रैंक 2 रे पुणी नेक्स्ट टेस्ट रे पुणी आउ जने रैंक 1 रे टॉप 10 जे रखुथियो तो सी तो 130 प्लस 130 100 प्लस 100 प्लस तो एटलीस्ट 10 कोटा पिला थिले तमनकर असुविधा कोन होची सो दैट 100 पहुंची पानुगी रेक्टिफाई करो जहां भी मिस्टेक करूचो एबे आउ टाइम पाइबो ये अपॉर्चुनिटी गला माने तम मानको भी जणा अछि जे पुणी जो बाहरिबो पुणी गोटे वर्ष पुणी जो बाहर एते एभली अपॉर्चुनिटी तो पाइबनी 700 1000 900 वैकेंसी तो पाइबनी हैला नेक्स्ट जो बाहर 300 केते बाहरिबो कि 400 केते बाहरिबो पुणी नुआ नुआ पिला सब डिप्लोमा कॉलेज जो गोटे गोटे टॉपर पिला तो थिबे ना जो एथरो जो पास आउट हेबे जति डिप्लोमा कॉलेज अछि प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो सब तो एटलीस्ट गोटे भलो पिला थिबो
ସେମାନେ ତମ କମ୍ପିଟିସନ ହେଇଯିବେ। ଯେତେ ଯେତେ ଡିଲେ କରିବ ସେତେ ତମ କମ୍ପିଟିସନ ବଢି ବଢି ଯିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ନିହାତି ବାହାରିକି ଯିବେ। ତ ତମମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି ପଢିବାରେ? ମେଟେରିଆଲ୍ସ ମିଳୁନି ନା କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ସବୁ କିଛି ମେଟେରିଆଲ୍ସ ତ ଅନଲାଇନ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ନୋଟ୍ସ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାନେ ଏତେ ସାରା ସବୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଇଗଲାଣି ତମମାନଙ୍କର ଫ୍ରିରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ପଇସା ଦେଇକି ପଢ, ଫ୍ରିରେ ପଢ, ଯୋଉଠି ପଢୁଛ ପଢ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସବୁଠି ସେମ୍। ସେଇ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଫ ମେଟେରିଆଲ ସବୁଠି ସେମ୍। ଏତେ ସାରା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ଫ୍ରିରେ ପଢିବା ପାଇଁ, ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ମିଳିଗଲା, ଡିସ୍କସନ ମିଳିଗଲା। ଯୋଉମାନେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଡିସ୍କସନ ଦେଖି ପାରୁନ କି ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କଣ୍ଡିସନ ନାହିଁ 1000-2000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆରିଆଣ୍ଟ କୁ ଦେଇକି ନବା ପାଇଁ, ବେଷ୍ଟ ଟିକେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ କୋଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ନେଇଥିବ ତାଠୁ ନେଇପାରିବ। ଏତେ ସାରା ଫ୍ରି ନିଜକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିପାରିଲେ ହେଲା। ଷ୍ଟିଲ୍ କେହି ଜଣେ ବି 100 ଆଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ଏଥର? ଭଲ ପିଲା ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ଥର ପଳେଇଲେ। ଭଲ ପିଲା ଖରାପ ପିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ନଥାନ୍ତି। ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଗୋଟେ ପିଲା କେତେ ମେହନତ କରୁଛି। ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଫ ମେଟେରିଆଲ୍ସ କୁ ତମେ 3 ଥର 4 ଥର ପଢ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବ, ଦେଖିବ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଲଗା। ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମେ କରିପାରିବ। ବଟ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଫ ମେଟେରିଆଲ୍ସ କୁ ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ କରିବ, କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିପାରିବନି। ବାସ୍ ଏତିକି ଡିଫରେନ୍ସ। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କି ସବଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ, ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ। ତମମାନେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ତ ଗୋଟେ 100 ଟାର୍ଗେଟ କର। 30-40 ଯୋଉମାନେ ଏବେ ବି ଯୋଉମାନେ ସବୁ 10-20 ରଖୁଛ, ସେମାନେ ତ ଟୋଟାଲ ମାନେ କ୍ରିଟିକାଲ ଡେଞ୍ଜର, ଆହୁରି କଣ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର ସ୍ପେସିସ ରେ ଅଛ। ଆଇଦର ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ତମକୁ ଲାଗୁଛି କି ଯେ ମୁଁ ଫାଇନାଲ ଏକ୍ସାମ ରଖିଦେବି। ସେମିତି କେବେ ଓଭରନାଇଟ୍ ସକ୍ସେସ ମିଳିଯାଏନି। ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ଯେତେ ସିନସିୟରଲି ଦବ, ଭୁଲ ଭାଲ କରିବ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏକ୍ସାମ ରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମନେ ଥିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି। ହେଲା, ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ଇଟ୍ସ ୟୋର ଲାଇଫ। ତମମାନେ ଜବ ପାଇବ, ତମମାନେ ଯାହାବି ତମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଚଳେଇବ, ତମ ଫ୍ୟାମିଲି ଖୁସି ହେବେ। ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରେ କଣ ଅଛି, ଏ ବ୍ୟାଚ୍ ଯିବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟାଚ୍ ଆସିବ। ନିଜ ଲାଇଫ ଗୋଟେ ଅପରଚୁନିଟି ଗଲା ମାନେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଇୟର। ତ ସିରିୟସ ହେଇଯାଅ। 71 କଣ କହୁଥିଲେ, 69 କଣ କହୁଥିଲେ? 70 ଗଲା, 69 ତ ଗଲା 30 ଲକ୍ସ, 70 ଗଲା ତମର ଅରିଜିନ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ସର୍ଭେ। 71 when two equally important roads cross roughly at right angles, the suitable shape of the central island कौन दबा? सर्कुलर है कुलर सर सर्कुलर ही दबा, क्रॉस रोड माने सर्कुलर ही दबा। Marshall stability test for bituminous mixture is carried out at what temperature +or- 1 degree centigrade? केते टेम्परेचर में करथांते? 60, 60 38. 73 the joints providing along longitudinal section direction to prevent spilling of concrete due to temperature and subgrade moisture variation. ताको हमें वार्पिंग कोउ जॉइंट कहबो? वार्पिंग वार्पिंग अच्छी ऑप्शन दे। आज्ञा कंस्ट्रक्शन एक्सपेंशन वार्पिंग जॉइंट ऑप्शन डी। maximum value of throw up switch for BG track 1.676 meter, BG narrow, metro or the standard gauge. maximum distance by which, maximum distance से कोई throw of the switch हैला, throw of the switch कौन? it is the maximum distance by which the toe of the tongue rail moves sideways. BG ପାଇଁ ହେଲେ 9.5 ରୁ ନେଇକି 11.5, ମିଟର ଗଜ ପାଇଁ ହେଲେ 8.9 ରୁ ନେଇକି 10। ତ maximum value ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ? throw of the switch BG ପାଇଁ ଦେଇଛି 115 11.5 सेंटीमीटर और 115। BG track standard weight of the rail per meter 50 BG ପାଇଁ 60 ଗୋଟେ ଥାଏ 60 mr, ଗୋଟେ ଥାଏ 60 mr, ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ 52 mr। କେତେ ହେବ आंसर? 60 mr 52 mr ତା ଭିତରେ ऑप्शन 55 76 which of the following statement regarding the common characteristics of building materials under stress is incorrect ପଡିଯାଉଛି? କୋଉଟା ଭୁଲ? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଭୁଲ? ductile materials can drawn out without knocking down the example
being copper and wrought iron. First टा ठीक ଅଛି भूल ଅଛି. Ductile materials can be drawn out without necking down. First statement is. Second coach is stiff materials have high modulus of elasticity. एटा तो कौन हला? Stiff materials have high modulus of elasticity. E रो value होचे अधिका. ताको मैं कहबा stiff. Third coach is flexible materials on the other hand have low modulus of यदि stiff रो high हला then flexible रो low हबो. C आउ D, B आउ C complementary होचे. Option D कहूचे कौन? Brittle materials have high plasticity. एटा ठीक की बोल. Brittle माने कौन? कार्बन कंटेंट अधिका, कार्बन कंटेंट अधिका माने डक्टिलिटी कम, डक्टिलिटी रिलेटेड टू प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी माने जाको जाको कोन करे डिफॉर्म करि परिबा ताको हम कहबा प्लास्टिसिटी. ताले कोटा होबे जो इनकरेक्ट. brittle material. ऑप्शन डी. Brittle material have low plasticity. 77. The ratio of ultimate creep strain to elastic strain. कौन कहबा? Creep क्रीप coefficient. कोएफिशिएंट. Coefficient. क्रीप कोएफिशिएंट बात को हम कहबा थीटा जोटा के 2.2 1.6 1.1 को दिन 7 days 28 days 1 year. 1 year. 7 days 28 days 1 year. ECE is equal to EC by 1 plus theta. Next goes a compound bar consists of two bars of equal length. Compound bar equal length. Steel bar cross section होची steel bar रो cross sectional area होची 3500 meter square. And that of brass bar, brass रो होची 3000 mm square. These are subjected to a compressive load. Compressive load केते 1 lakh Newton. 1 lakh. 100 kilonewton. 1 lakh Newton. If ES रो value तुमको दे दीची क्वेश्चन ले, EB रो value दे दीची, then stress developed in the bar. Stress developed केते 50. केते हे जो stress develop दी जंको लेंथ सेम अछि जेतु लेंथ विषय को जेतु कंपाउंड बार अछि लेंथ विषय कोनसी मेंशन करनी दी जंकर लेंथ सेम अछि हैला. स्ट्रेस पचाछि स्ट्रेस इज इक्वल टू कोन हे लोड पर एरिया. ब्रास अछि एवला लोड पर एरिया. लोड बर्तन हमें केमिति कैलकुलेशन करबा. लोड डेल्टा दी जंकर सेम आसीबो कि नहीं एबोली क्वेश्चन रो कांसेप्ट होछि कोन जेतु कंपाउंड बार अछंदे सेम लेंथ रो अछंदे ताले डेल्टा दी जंकर सेम आसीबो. elongation is equal to कोन PL upon AE equal to PL upon AE. एटा हो सपोज स्टील रो एटा होछि ब्रास रो दी जंकर लेंथ सेम. यंग्स मॉडुलस क्वेश्चन देइछि एरिया क्वेश्चन देइछि ताले हम एटु कोन पाइ जिबा लोड पाइ जिबे कि नहीं हैला बाहर करबा एटु त माने लोड ऑफ द स्टील डिवाइडेड बाय 3500 into 0.2 मेगा माने 10 to the power डेका हेक्टर किलो मेगा जिगा टेरा पेटा हेक्सा. डेका हेक्टर किलो माने 10 to the power 3 डेका हेक्टर किलो मेगा 10 to the power 6 10 to the power 6. सेमिति माइनस टे कोन करिवो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नानो पिको फेम्टो ऑटो इक्वल टू ब्रास रो एरिया डिवाइड बाय 3000 into 0.1 into 10 to the power 6 ହେଲା. तो PS आउ PB भितरे उठे रिलेशन पाई जीवो दिटा ए जो एबव को सॉल्व करले कोन पाइबो 3PS इक्वल टू 7PB. गोटे होचे 3 गोटे होचे 7 ताले टोटल 3/10 कर दो आउ 3/10 कर देले टोटल लोड पड़छि कते 1 लाख पड़छि 1 लाख पड़छि माने गोटे होई जीवो केते 70 आउट होई जीवो 30. तो गोटे होई जीवो 70 बाय एरिया आउट होई जीवो 30 बाय एरिया केते बार आंसर 70 माने 70000 बाय 3500 गोटे होई जीवो 3500 काटले गोटे आसीबो 20 आसीबो स्टील रो आसीबो 20 ब्रास रो आसीबो 30000 बाय 3000 10 20 गोटे 10 गोटे.
79. तो slope of curve of SFD, a shear force diagram at any section, will be equal to dv by dx होची कोन लोडिंग डायग्राम शो करिवो dv by dx शो करिवो लोडिंग डायग्राम सेमिति dm by dx शो करिवो shear force कोन हो ऑप्शन the ordinate of Loading diagram at the section. loading diagram option Loading diagram at the section. 80. The shear force at any section of a beam is equal to the algebraic sum of the forces all the transverse force perpendicular to the axis of the beam. Option C. 80. For a strongest rectangular beam cut from a circular log, the ratio of the width to depth. এটা ডাইরেক্ট গুপ্তার কোশ্চেন তার ডাইরেক্ট কোশ্চেন মনে রাখিব 0.707 707 82 82 ଗୋଟେ overhanging portion ଦେଇଛି horizontal beam carrying UDL is supported with equal overhang shown in the figure. The resultant bending moment at a mid span will be 0 if O criteria if A by B ର ratio ପଚାରୁଛି A by actually आज ଯଦି ଆମେ bending moment diagram draw କରିବା ହେଲା आगे shear force कोला आसीबो एटा पर आसीबो shear force एठो जे ଗୋଟେ लोड पडुची तो एठी इंक्रीज करिवो पुणी एठी ଗୋଟେ लोड पडुची ए टाइप आसीबो shear force diagram bending moment diagram केमति आसीबो जोटी shear force आसीबो तमरो 0 सेठी bending moment आसीबो मैक्सिमम एटा के एटा हे जो तमरो bending moment diagram हेलो तो A by B रो रेशियो केते हो एठी 0.5 तर इक्वल ओवरहैंग अछि अधा हे गेली 83. A rectangular beam has been subjected to torsion. The maximum shear stress will occur at rectangular beam रे maximum shear stress कोन parabolic आसीबो आ maximum कोठी आसीबो सेंटर सेंटर रे आसीबो tau maximum by tau average is equal to 3 by 2 by 1.5 circular रे केते हे जिवो 4 by 3 84. सर एटा ऑप्शन ए हवा एट द सेंटर तो Option A at the center. At the center ही होबो option A ही होबो आ कोन option देछि सर आंसर दे option Middle of longer side. नंबर साइड देथिला आंसर हां एटा भी तो आंसर ना सेम जिंस मिडिल ऑफ द लॉन्गर साइड भी तो सेम जिंस एटा हो शॉर्टर साइड एटा हो लॉन्गर साइड तो एटा हलानी मिडिल ऑफ द लॉन्गर साइड वो ऑप्शन दा देले सर देन एई ऑप्शन को चूज करिवो मिडिल ऑफ द लॉन्गर साइड कारण एट द सेंटर कहला माने एई पॉइंटटा बुझो छै कि नहीं बट ए टोटल ले सेम आसीबो कि नहीं मैक्सिमम ओके ताले कोन हे गला सुटेबल आंसर मिडिल ऑफ द लॉन्गर साइड ओके $84. An open coiled helical spring of mean diameter D, number of coils N, and wire diameter D is subjected to an axial force P. The wire of the spring will be subject to tau by torsion যদি apply করিব tau by r is equal to g theta by l is equal to t by j কোন হইব এটি combined shear bending twisting Bending and twisting. Testing. shear ରହିବ bending ରହିବ twisting ରହିବ which option indicates fracture in a mild steel specimen assume it fails the torsion test अच्छा फिगर ଦେଇଛି torsion test को फिगरটা হবে पूछो को फिगरটা হবে torsion से कोची which option incites the fracture in a mild steel specimen assume it fails the torsion test रे ये फेल हो जाई छी
ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପୁରା। ये तो हबन ये हबन ए दुईटा ভিতরে ଗୋଟେ आंसर ये इंक्लिनेशन ଅଛି ये स्ट्रेट ଅଛି ऑप्शन डी। द प्रिंसिपल हां एक्चुअली भांगी जाइछ ना दी पार्ट हे जाइछ तीटा पार्ट हे जाइछ टॉर्सन अछि ना भांगी जाइछ टॉर्सन जदि हम एलोंगेशन करबा तो ऊपर वाला आसीबो एलोंगेशन करले तो टॉर्सन ले पूरा भांगी जाइछ 86 the principle states that hello so coach एमन होतो को principle states that if a reaction acts through an imposed displacement the corresponding displaced shape of the structure is to be some scale the influence line for the particular reaction is called as মানে এটা মুলার বেসলো প্রিন্সিপল आईएलडी माने मुलर बेसलो प्रिंसिपल जे कौन से रिएक्शन पे हम आईएलडी करिवा से रिएक्शन रे गोटे यूनिट लोड पके देबा एटा हे जो धर आईएलडी फिक्स्ड बीम इज इंटरमीडिएट टू व्हिच डिग्री फिक्स्ड बीम 336 6 रु 3 गला 3 एटा कोन हे जो अप टू 3 डिग्री माइनस आरआर हे जो 0 नेक्स्ट 88 Castigliano's theorem 2 falls under the category of कोटा कोन 87 आंसर तक हो सेकंड डिग्री हो 87 आंसर होची फिक्स्ड बीम देखि फिक्स्ड बीम माने इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर द एनालिसिस करबा फिक्स्ड बीम आगे केमिति भाग करबा डीएस ई भाग करबा दैट इज आरई - 3 आरई केते एठी तीनटा रिएक्शन एठी तीनटा रिएक्शन 6 टा टोटल हला 6 टा 6 - 3 हला 3 डीएस आई भाग करबा कोन 3c - आरआर 3 इनटू क्लोज लूप होची 0 माइनस आरआर होची 0 तो डीएस आई गला 0 ताले टोटल डीएस केते हे गला 3 + 0 = 3 3 हो आंसर थर्ड डिग्री Castigliano's theorem 2 falls under category of 88 फोर्स मेथड को category force method गोटे मन रखिबा आरटा ऑटोमेटिक मन रहिजो धर डिस्प्लेसमेंट मेथड कहत मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हे गला स्लोप डिफ्लेक्शन हे गला कानिस मेथड हे गला Castigliano's theorem 1 हे गला दैट इज डिस्प्लेसमेंट मेथड सेमे Castigliano's theorem 2 टा होची फोर्स मेथड को टाइप रो ट्रस एटा क्वीन हेले गोटे स्क्वायर रहइबो ताको कहबो क्वीन जदी स्क्वायर टाइप रो रहला दैट इज योर क्वीन पोस्ट एटा तला को पोस्ट होबो सिंपल थिंग सिंपल थिंग क्रॉस हैला जदी खाली सिंपल एमि थांता एटा होजी किंग पोस्ट खाली गोटे बॉक्स टाइप होतले दैट इज योर क्वीन पोस्ट एटा होची सिंपल थिंग क्रॉस What is the flexural strength of M20? M20 ର flexural strength 0.7 into FCK ର root over 20 ର root over into 0.7 ହେଲା 4 point something ଆସିବ 4 point something into 0.7 ମାନେ 3.13 megapascal. 3.13 A bar of diameter D embedded in a concentric block embedded in a concentric block or concrete block with a pull out force applied to it pa applied to it the length of the embedment is represented by L tau bd is the bond strength and Fy is the tensile strength of the bar which one of the following represents the maximum value of the P মানে এটা হচ্ছে একটা কংক্রিট ব্লক চৌথিরে ଗୋଟେ বার ଅଛି force equal to कौन है जो area of the bar by 0.87 into Fy into area stress into area 0.87 Fy into area তাহলে 0.87 Fy into area केते है जो सर्कुलर अछि pi by 4 into square option A 0.87 Fy into pi by 4 into d square এটা তুমি इजीली करि पाथन कारण सर्कुलर पोर्शन एरिया माने pi by 4 into d square ही अछि if the sides of a slab simply supported on a edge
spanning in two direction are equal, the maximum bending moment is multiplied by केते हेजिवो 0.5 0.5 এটা ऑप्शन तो नाही दिदरा बोले क्लोज आंसर दे दीची 0.5 হবে এমান ভিতর গোটে आंसर হবো 0.5 ହେଲା ସେ କେମିତି ଏଟା ହବ 0.5 এটা হচ্ছে আমার ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং মোমেন্ট অফ ক্রাইটেরিয়া দ্যাট ইজ ইওর r4 by 1 plus r4 into wl square by 8 in case of slab ହେଲା r হচ্ছে কোন lx by ly lx upon ly to the power 4 divided by 1 plus lx upon ly to the power 4 that is your maximum bending moment criteria lx upon ly হচ্ছে কেতে 1 কারণ এটি কোশ্চেনে দেইছে spanning in two direction are equal lx ଆଉ ly হচ্ছে equal तो 1 to the power 4 by 1 plus 1 to the power 4 কেতে ହେଇଗଲା 1 by 2 1.5 2.5 calculate the axial load in a compression member for M20 grade दे देला FCK दे देला 20 MPa of concrete and Fe दे देला 415 still having an area of the concrete SC दे देला 500 area of longitudinal reinforcement for a column area of the reinforcement दे देला 1200 केमिन करिवो FCK दे देला Fe दे देला SC दे देला AST दे देला P equals to 0.4 FCK SC very good plus PU is equal to 0.4 FCK into SC plus 0.67 0.67 into FY into ASC ହେଲା 0.4 into FCK होचे 20 into area of the concrete देछि 500 plus 0.67 into FY तो 415 into ASC केते 1200 खाली वैल्यू पुट करू केते बार चेंज 337 337 option C 94 as per IS 456 the minimum nominal cover specified for footing 50 mm सर 50 mm ये सब मोर पे रह जा दरकार स्लैब रो slab ର 40 20 mm slab ର 25 15 रो नहीं कि 20 कॉलम रो 40 40 40 40 mm 95 the connection of one beam to another beam by means of an angle at the bottom and an angle at the top is known as মানে এটা হচ্ছে গোটে বিম হলা এটা হচ্ছে গোটে বিম এটা হচ্ছে আউট বিম উপরে গোটে কনেকশন লাগিছে তলে গোটে কনেকশন লাগিছে একে আমি কোন কোন কো অ্যাঙ্গেল Fitted connection. সিটেড কনেকশন Seat angle. সিট অ্যাঙ্গেল হলা সিটেড অ্যাঙ্গেল বা সিট অ্যাঙ্গেল উপরটা কোন কইবা ক্লিট অ্যাঙ্গেল CLET ক্লিট অ্যাঙ্গেল অপশন লে ଅଛି ହଁ সিটেড কনেকশন অপশন সি 96 in a truss girder of a bridge a diagonal consists of mild steel flat 400 ISF Indian standard flat section and carries a pull of 80 tons if the gross diameter of the rivet is 26 mm the number of the rivets required for the splice कौन करियो IS कोड को फॉलो करिवो IS कोड को फॉलो करिवो IS 800 ହେଲା से कहूचे डायगोनल कंसिस्ट ऑफ ए माइल्ड स्टील फ्लैट 400 ISF 80 टन पडुची आगे फास्ट कोन करिवो शियर स्ट्रेंथ कैलकुलेशन करिवो शियर स्ट्रेंथ केम कैलकुलेशन करिवो एरिया इनटू शियर स्ट्रेस ହେଲା तापरे बियरिंग स्ट्रेस कैलकुलेशन करिवो बियरिंग स्ट्रेस इनटू एरिया D इनटू T केते बाहरिवो देखिए
केते बार आंसर ହେଇନି sir। ହେଇନି ए क्वेश्चन कार हलानी चलो ट्राई करो ट्राई खाता देखिए ट्राई करबा आनबो हिंट दे दोजे शियर स्ट्रेंथ कैलकुलेशन करिवो दैट इज योर क्रॉस गार्डर अच्छे ब्रिज अच्छे डायगोनल कंसिस्ट ऑफ ए माइल्ड स्टील कैरीज ए पुल ऑफ 80 टन इफ ग्रॉस डायमीटर देइछे 26 mm माने एटा बियरिंग पाई दे दी चला 26 mm जो ग्रॉस टा देइछे एटा होची बियरिंग पाई शियर स्ट्रेंथ इक्वल टू कोन हो जिवो 2 into pi by 4 into d square into करिवो शियर स्ट्रेस हैला आईएस कोड देखि कहबो शियर स्ट्रेस केते नबो गोटे होची 100 गोटे होची 300 सब कहि देले ट्राई करिवो another one is your bearing strength bearing strength is equal to कौन सिग्मा बी इंटू डी इंटू टी सिग्मा बी गोटे शियर स्ट्रेस टा 100 नेटा 300 पावर डिवीजन डिवाइड 100 आउ 300 फॉर पावर डिवीजन डिवाइड शियर स्ट्रेस होची 100 बियरिंग होची 300 300 इंटू डायमीटर क्वेश्चन देइची केते 26 देइची हैला डायमीटर तो क्वेश्चन मेंशन करची 26 आउ थिकनेस केते कंसीडर करिवो थिकनेस केते कंसीडर करिवो 400 आईएसएफ दे दीची ना इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट सेक्शन सिग्मा एठो बियरिंग स्ट्रेंथ बाहर करिवो एठो शियरिंग स्ट्रेंथ बाहर करिवो हैला देखिवो केते बाहरुची तापरे कोन करिवो मिनिमम स्ट्रेंथ को कंसीडर करिवो नंबर ऑफ द रिवर्स केमिति कैलकुलेशन करिवो जो भी तमरो बियरिंग स्ट्रेंथ आ शियरिंग स्ट्रेंथ भाला तारा जोडा मिनिमम वैल्यू दिबो ताको नबो 80 टन लो लोड पडुची माने किलोमीटर कवर करिवो 800 बाय जेति तम स्ट्रेंथ आतियो दैट इज मिनिमम ऑफ बियरिंग आउ शियर एटा करि के पठियो गोटे 300 नबो गोटे 100 नबो 100 होउची तमरो शियर पाई 300 होउची तमरो पावर डिवीजन डिवाइड पाई इन केस ऑफ पावर डिवीजन डिवाइड रो बियरिंग पाई देखिबो केते बाहरची 800 बाय 100 नॉर्मली तमरो आसीबो केते 100 पाखा पे के आसीबो देखिबो गोटे 100 गोटे 300 हेले 100 पाखा पे के आसीबो तमरो मिनिमम रिवेट स्ट्रेंथ 8 पाखा पे के आसीबो आंसर 97 give the full form of high strength friction grip ए हो फास्ट ऑफ फ्रिक्शन ग्रिप बोल high strength friction grip 98 physical depreciation is due to what Wear and 97 wear 97 ଟା କଣ sir 97 high strength friction grip Friction grip ball. HSFG high strength friction grip 99 the approximate quantity in kg of bending and bending the reinforcement of mild steel per motion per day 75 375 binding corrier capacity that is your 375 kg RCS ले 3 PCS ले 5 मीटर क्यूब काम कर परिबे 100 which of the following statement is incorrect एमान भितरु कोटा incorrect लास्ट क्वेश्चन सब आंसर कर option D sir। ऑप्शन डी कोची shallow thin works shall be measured in cubic units एटा भूल कि नहीं डीपीसी thin work डीपीसी होची थिक हमर थिकनेस फिक्स्ड होची डीपीसी को मेजर करते मीटर स्क्वायर रे और से कोची एठी मीटर क्यूब रे हमें करबा shallow and thin work को हमें ताले करेक्ट करबा देन shallow और thin work को कोची मेजर करबा मीटर स्क्वायर रे मेजर करबा सर 95 95 95 होची हमें से जो ऊपर लग गया तक हमें कहबा क्लीट एंगल तोड़ा कहबा हमें सीट एंगल सीट एंगल सीट कनेक्शन हो शिफ्टेड कनेक्शन एक हमें कहबा ऑप्शन सी शिफ्टेड कनेक्शन 3 नंबर टा 96 रो 96 टा करी समस्या सेंड करी तो 3 नंबर टा दिया आंसर कह देली 8 होच आंसर 3 नंबर
नेगेटिव फ्लोट पा फ्लोट माने कौन फ्रीडम हम पाखर फ्रीडम अछि कि ना सुपर क्रिटिकल एक्टिविटी माने सुपर कौन तुम क्रिटिकल पाखरे एक्टिविटी ऑलरेडी माइनस से चलछो क्रिटिकल माने डेंजर लाइन सब क्रिटिकल माने तुम पाखरे टाइम अछि सुपर क्रिटिकल माने तुम डेंजर लाइन ले अछो डेंजर लाइन ले अछो माने कौन जदि गोटे काम को 4 दिन ले सारिया थिला तुम हेटा 6 दिन लागलानी ता माने फ्लोट केते हबो -2 हबो ना +2 हबो फ्लोट माने फ्रीडम 4 दिन ले सारिबार थिला 6 दिन लागि गला फ्रीडम माने कौन फ्रीडम तो नाही और एक्सीड करि गला ताको हम कोन कहबा नेगेटिव फ्लोट हैला ट्राई करो समस्त 100+ आनिया को ट्राई करो आज्ञा आ कोन क्वेश्चन सर सर्वे क्लास केते स्टार्ट हो ऑफलाइन बाकी जाई परियो ऑफलाइन काल टू सर्वे नबा तमर बता को ऑफलाइन क्लास चलछि सर ऑफलाइन ऑफलाइन पिला माने अछंती की ऑफलाइन अछंती की वर्तमान क्लास रे आप ऑफलाइन पिला माने अछंती की ऑफलाइन पिला माने ଆଜ୍ଞା यस सर तममान एबे को क्लास केते टाइम रे चलछि सर हमरो एबे किछि नाही सर सॉइल सरी गेले कॉल्स पर आउ किछ चालिनी तो कालीठू तमरो सर्वे रहिबो तो ଆଜ୍ଞା तममान को डिमांड कोन सर्वे रहिबो ना रहिबोनी कोन कहउ छ ରହିବ हां सर करिए सर सर्वे ठीक करिए अछि काल टू सर्वे न ऑनलाइन करिए सर टाइमिंग माने ऑनलाइन ना ऑफलाइन कोन बुझा कोन ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन कालीठू सर्वे ऑफलाइन रहिबो ଆଜ୍ଞା टाइमिंग रहिबो तमरो देखो तमर देबे किछि क्लास नै हैला मोर वर्तमान रिवीजन बैच रहिछि ता सहित टेस्ट सीरीज डिस्कशन दोउछि टेस्ट सीरीज प्रिपरेशन दोउछि ता सहित से टॉपर स्टॉक चलछि तो से सब देखिया गले तमाने एनी टाइम डाकिले आसे पड़ियो माने मॉर्निंग 7 रु नै कि इवनिंग 7 ए टाइम रे एनी टाइम कंफर्टेबल सर ऑनलाइन कर देना सर बेटर हो सर ऑनलाइन तो माने कथा हो इंस्टीट्यूशन सहित कथा जदि समस्त राजी हो ऑनलाइन पे दिन ऑनलाइन नै जिवो आज्ञा मोर इंस्टीट्यूशन सहित कथा हेई जानतु जदि समस्त ऑनलाइन कहिबे देन ऑनलाइन नै जिवो हैला ସାର୍ ଅଫଲାଇନ୍ ତ ନାହାନ୍ତି ଏଠି ऑफलाइन पिला की नाहंती तमान निजे जे कोदो ऑनलाइन नै जाओ କାଲି ସାର୍ ଅଫଲାଇନ୍ ନେଇଯିବେ ऑनलाइन रे सर ट्रांसपोर्टेशन चलछि आउ एनवायरनमेंट अच्छा तमान ऑनलाइन पिला माने कंफ्यूजिंग हो गलानी अच्छा आज्ञा ऑनलाइन सर पिला अलगा ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन पिला अलगा आज्ञा मु पचार ऑफलाइन ले के अछ